I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं and you're doing absolutely great. Huge welcome to all of the brand new starters in the business. आप लोगों की तरह एक दिन ऐसे ही मैं भी एक फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर ट्रेनिंग को अटेंड कर रही थी few years back when I got started. So I'm sure many of you know me, and for them who do not know me, my name is Binish and I am part of Forever, this opportunity for the past 4.5 years now. So I'll be completing my 5th year by end of this year, inshallah. So ये चीज जो है आपकी समझना बहुत जरूरी है. Like this is one of the very important manuals of the company. And this is the very first training that I would emphasize कि आप इस पे focusedly इसको watch करें और plus आप इसके through अपनी first step to manager booklet को fill भी करें because it is very, very important. Secondly, I am on the marketing plan. At the moment, I am a Sapphire manager, means I have in my different lines, I have alhamdulillah been able to coach people to reach to the manager position. So inshallah, you are going to learn every single thing from my experience, and also I am going to give you so many piece of tips on this training. ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कहा जाता है ना, किसी भी चीज को चलाने के लिए उसका मैनुअल होना बहुत जरूरी है. उसी तरीके से इस बिजनेस को चलाने के लिए ये इस बिजनेस का मैनुअल है, राइट? सो इफ यू डोंट हैव इट, if you are not going to follow it, if you are going to change the cycle, अपने माइंड से, अपने सोच से, अपने जहन से चीजें काम नहीं करेंगी. सो अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि आपका बिजनेस राइट वे में जाए और आप हर चीज अचीव करें, whether it takes you 5 months, whether it takes you 1 year, you are able to achieve every single thing on the marketing plan. Baki, huge welcome. Let's get started. I will just put up my slides. I'll just give the focus over there. So let's begin, inshallah. जिसके पास फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट जो है वो अपने पास ओपन कर लें फ्रंट पे, ताकि you can inshallah take your notes on that. Rather, you can even write your goals while we are actually going through this booklet. I'm going to try to cover it as soon as possible I can. Retail की बहुत सारी चीजें जो inshallah I will cover in the next training as well, but this is something that I have to give you an overview of. ठीक है? So the very first thing is कि जो फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट है वो आपकी बिजनेस की बिल्कुल स्टार्ट में आपको इसको यूटिलाइज करना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है. लाइक यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस कंपनी. किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट उसकी लाइफ होती है, ठीक है? तो इस अपॉर्चुनिटी में, इस बिजनेस में, इस कंपनी का भी एक मिशन स्टेटमेंट है. So the Forever's mission statement is, we will create a profitable environment where individuals can with dignity be what they want to be. Whatever you want to be here, you can inshallah be. अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, whatever you want to work, whatever you want to achieve, but where integrity, empathy and fun are our guides. We will create and cherish a passion for and belief in our company, our products and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all, we will be courageous as we lead our company and its forever business owner. This is a mission statement of the company that you are part of. So Forever is your business opportunity, right? It is your way of ruling the world, I would say, that you can learn anything and everything, and you can just master every skill from this platform, inshallah, and you can achieve anything. So take this opportunity with open-mindedness, right? कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं सीखी जा सकती. कोई भी किसी भी काम को आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते. उसी तरीके से इस बिजनेस को भी सीखने के लिए आपको मे बी अपनी स्पीड के हिसाब से हो सकता है कुछ लोग 1 महीने के अंदर अंदर they are able to rule the world. I mean, they're able to achieve every single thing on the marketing plan. Just yesterday, I was speaking to one of the team members. Mashallah, she has achieved her supervisor level over just 8 weeks of time. इसी तरीके से there are a lot of people who have achieved manager in this span of time. So हर बंदे की जो अपनी एक journey है वो separate है, different है. It's all that up till and until you are consistent, you can achieve anything.
प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, वी ऑल नो दैट कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, आप बिल्कुल एक सिक्योर कंपनी का पार्ट है। मीन्स के आज कोई बैंकरप्सी नहीं होने वाली, कोई आके बैंक आके बात नहीं करने वाला यहाँ पे कि आप हमारा शेयर दो, या फिर कोई शेयर होल्डर्स नहीं आने वाले। कंपनी का किसी के ऊपर कोई उधार नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर किसी का कोई उधार नहीं है कि कंपनी ने उसको देना है, तो मीन्स कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, so you are part of something very secure. Cash rich or debt free means आप there is no loan as I told earlier. तो कंपनी के अपने कैश जनरेटिंग एसेट्स भी हैं, कंपनी के पास अपने ऐसे कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं जिसके थ्रू कंपनी के ओनर्स ऑलरेडी बहुत पैसा बनाते हैं, चाहे वो कैसल्स हों, चाहे वो फार्म्स हों, चाहे वो साउथ फोक रैंच हो, चाहे देयर आर सो मेनी प्लेसेस दैट द कंपनी ओन्स, इवन मोस्ट ऑफ द हेड ऑफिसेस ऑफ द कंपनी आर owned by, they are the properties of the company. So the owners are not actually running this business just to make money out of it, they are already very rich, and the main idea of running this company is to enrich people's life. So whether it is with the product or whether it is with the opportunity. So over 43 years now, and continued for the growth. आप कह लो कि चाहे पेंडेमिक हो, चाहे आप कह लो कि रिसेशन आया था, कंपनी की कभी भी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी इज एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल आउट द वर्ल्ड वाइड विद दिस अपॉर्चुनिटी, और वी आर मेनी ऑफ अस आर एग्जाम्पल ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। और वी हैव लिव्ड इट कंप्लीटली। आई वुड से कि ग्रोथ जो है कंपनी की, अगर देखा जाए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जिस लेवल की होती है व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ, इट इज अनमैचेबल। ग्लोबल मार्केट प्लेस है, कोई आपको रोक नहीं सकता कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया में सेल्स नहीं करनी है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस नहीं है, या आपके पास कनाडा का लाइसेंस नहीं है, आपके पास यूके का लाइसेंस नहीं है। आपने अपनी कैपेबिलिटी खुद बढ़ानी है ताकि यू कैन रीच ऑन to whatever place you want to using your social media platform. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ा हम पढ़ा करते थे, और उसके अंदर कितनी चीजें ऐसी भी हम हम पढ़ते थे कि everything is now coming closer, and because of the social media everything has become actually very very easy. Like आपका किसी के साथ फोन पे बात करना आज से आई थिंक 20 साल पहले शायद एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और you have a chance to rule the world by using your social media platform. So it is on you how you are going to learn about them. आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, कंपनी ने आपको चांस दे दिया, आपका बिजनेस जो है वो लाइसेंस कर दिया ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। यू कैन डू एनीथिंग that you want to. कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स पे काम करने का चांस मिल रहा है। ये प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ रहा है, तो मीन्स ये आउट ऑफ द वे जाके आप किसी किसी चीज पे काम कर रहे हो जो किसी की जरूरत की नहीं है। लाइक ऐसी कोई चीज आपको दी नहीं जा रही। आप यू आर हेल्थ प्रोवाइडर, यू आर अ बिजनेस प्रोवाइडर, राइट, यू आर द कोच हियर। तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आपके डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे आपकी टूथ जेल होगी, शैम्पू, कंडीशनर, हनी, ऐसी कोई भी चीज इस रेंज का पार्ट नहीं है जो इंसानियत के काम ना आ सके। लाइक हम लोगों के काम ना आ सके, आपके लोग जो अराउंड रहते हैं उनके काम ना आ सके। अगर आपके पास लोग हैं जो अपने बाल धोते हैं, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ कस्टमर। If you have people around you who wash their hair, you are going to find a customer, right? So the products are consumable. Your future is safe with Forever completely. Don't worry at all, because अगर आप कंपनी का ग्राफ देखो, इवन इफ अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो, वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट richest people who are part of this company, if you search about them, whether it is Rolf Kip, whether you search about one of our uplines, Ma'am Jane Leach, you're going to learn so much about them. So you can trust the company that your future is safe here, with the marketing plan, with the product range, and with the incentives, and also with the pay that the company gives to the even brand new starter. As an assistant supervisor, you get a huge chance to grow. So your opportunity is uncapped. ठीक है, आपकी इनकम पे कोई कैप नहीं है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो ये आपकी बंदी हुई
रकम है जो आपको मिल सकती है, उससे ज्यादा आप कमा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ग्लोबल इनकम पे कोई स्टॉपेज नहीं लगा सकता। आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप राइट माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, यू कैन ग्रो योर ग्लोबल इनकम एज वेल। फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव कंपनी का एक इंसेंटिव है जो कि कंपनी देती है एफबीओस को, जो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कंसेक्यूटिवली 3 साल के लिए। और अप टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन माय, I would say कि I'm still in my first 3 years of my very first car plan, and company आपको दोबारा भी चांस देती है कि after 3 years आप दोबारा इसको renew कर सकते हो. So forever to drive level 3 qualifier I am. There are 3 levels, level 1, level 2, level 3. आप किसी को भी qualify कर सकते हैं. हर level के ऊपर एक different number of income है जो आपको amount है जो आपको मिलती है 1500 दिरहम से लेकर 3200 दिरहम तक. ग्लोबल ट्रैवल्स आप अचीव कर सकते हो. 2 ट्रैवल्स होते हैं कंपनी के पर ईयर, आप उनको अचीव कर सकते हैं. चेयरमैन बोनस चेक टर्नओवर ऑफ द कंपनी होता है, प्रॉफिट नहीं होता. काफी कंपनीज जो हैं वो जो एफबीओस को या अपने बिजनेस ओनर को जो शेयर्स देते हैं वो 1% जो भी दिया जाता है वो टोटल प्रॉफिट में से निकाल के देते हैं. लेकिन ये कंपनी आपको देती है आपके टोटल टर्नओवर, जितनी भी कंट्रीज के अंदर पूरा टर्नओवर आया उसके अंदर से 1%. वो सुनने में बड़ा छोटा लग रहा होता है कि 1% वो छोटी सी अमाउंट है, बट वो चेक्स रेंज कर रहे होते हैं $3,000 से लेकर $1.5 मिलियन. सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है. आप यकीन करें, जब मैं किसी को ट्रेन कर रही होती हूँ, आप में से बहुत सारे न्यू स्टार्टर्स जब आते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करना आता. And I personally think I was also one of them. When I got started, I had no idea how to use Instagram, how to use LinkedIn, how to use, different social media platforms. But because of this opportunity, I was able to learn everything. So आपकी personality की जो development है वो कहीं पे भी नहीं हो सकती. ये यहाँ पर वो वाले courses आपको provide किए जाते हैं जो आप बाहर अगर कहीं से कर रहे हो तो उनके लिए आपको हजारों देने पड़े. अगर कोई आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ और आप उनसे कहो कि मुझे मार्केटिंग सिखाएं, या आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज दें, या फिर आप मुझे एड्स लगाना सिखाएं, आप मुझे पोस्टर्स बनाना सिखाएं, लाइक व्हाटएवर इट इज पार्ट ऑफ आवर अपॉर्चुनिटी. स्पीकिंग स्किल्स आ गई, आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीका आ गया, आप हर चीज इधर सीखोगे. आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है यहाँ पे. लेगेसी स्टाइल बिजनेस है. कोई आप no matter whatever age you reach to, no matter to whatever country you go to, or God forbid something happens to you, आप इस बिजनेस को इवन विल कर सकते हैं टू योर फैमिली. आप यहाँ पर एक लेगेसी बिल्ड करने आए हो, यहाँ पर आप अपनी एक इमेज बनाने के लिए आए हो. मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम जिंदगी में करते हुए देखा है और बहुत मेहनत करते हुए भी देखा है. मैंने खुद पर्सनली बहुत मेहनत की हुई है. आई वाज रनिंग माय स्टोर इन दुबई फॉर मेनी इयर्स. मैं यहाँ पर अपना क्लोथिंग लाइन चलाती थी. मेरे like I was working with so many TV channels, I was working with so many media persons. और यकीन करें कि जो डेवलपमेंट, जो लेगेसी मैंने फॉरएवर में बिल्ड किया है, आई थिंक मैं वो कभी भी बिल्ड नहीं कर सकती थी इन एनी अदर बिजनेसेस इन द वर्ल्ड. और एनी, अब जॉब की तो बात ही ना करें. जॉब में तो इंसान एक बहुत ही आई वुड से एक सेल्फिश हम बनना सीख जाते हैं ना. जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम जॉब में होते हैं और हमारी मजबूरी भी होती है कि आप एक सेल्फिश इंसान, बिकॉज आप जाते हो, यू डू द वर्क लाइक अ मशीन, यू कम बैक, आपको एक रकम दे दी जाती है, एक पैसा दे दिया जाता है कि भैया आपकी ये, आपने जो मेहनत की है, काम किया, ये आपकी यही जो है आपको पे मिलेगी. तो वहां पर इंसान थोड़ा सा सेल्फिश इस वजह से हो जाता है कि वही रूटीन वो फॉलो कर रहा होता है, मशीन की तरह चल रहा होता है, और उसको लगता है जिंदगी शायद ऐसे ही है, यू नो. सो इस वजह से चॉइसेस वहां पर नहीं होती हैं. आप बेसिकली किसी और की मर्जी के हिसाब से चल रहे होते हैं. लेकिन बिकॉज आई हैव रन अ बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस रन किया हुआ है, तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर और फॉरएवर बिजनेस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस जानती हूँ. और इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार भी ये चीज रिपीट भी करती हूँ कि ट्राई टू own this opportunity like your own little baby. It is going to benefit you for the rest of your life. आपका लाइफस्टाइल विदाउट कॉम्प्रोमाइज जो है वो बेटर भी होगा. आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे. इवन बीइंग योर अपलाइन मैनेजर, आई विल नेवर कम टू योर डोर एंड से knocking at your door in the morning कि
क्यों आप काम नहीं कर रहे? Why are you taking rest? Why are you going to holidays? Why are you going to any place? Or why you are not doing your work from the table? मतलब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, नो डेट, नो मॉर्गेज पेड, आपको कहीं पे कोई एक्सपेंसेस कोई भी करने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग्स फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे जिस आप जो टेस्ट करते हो वो कहीं और पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप एक रिलैक्स किस्म के एनवायरनमेंट में ग्रोथ कर रहे हैं कि जहाँ पर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जो जिम्मेदारी खुद पर्सनली लेना चाहें, इट्स फाइन, बिकॉज दैट इज फॉर योर ग्रोथ। बट अगर आप नहीं लेना चाहें तो आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कहीं से नहीं की जाती। और आपको एक चांस दिया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई उधार है या आपके ऊपर कोई कर्जा है, आप उसको उतारना चाह रहे हो, तो इस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट से आप उतार सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है। मॉर्गेज पे करते हैं लोग अपनी, आप सोचें कि अगर प्रॉपर्टीज ली हुई हैं लोगों ने, तो कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपनी मॉर्गेज भी पे करते हैं। और आप सोचें, वी आर एक्चुअली द एग्जांपल्स ऑफ दैट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपकी। ये नहीं है कि बस आपने बिजनेस किया तो आपकी टाइमलाइन लगी हुई है कि आप साल 2 साल ही इसके अंदर एक्टिव रह के काम कर सकते हो, उसके बाद आपका जो है वो खत्म हो जाता है टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप कितना अरसा, कितनी ज्यादा मेहनत कर कर इसके अंदर एक्टिव रहना चाहते हो। इट इज टोटली ऑन यू। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है यहाँ पर, आपकी इनकम जो है वो सिक्योर्ड है। टाइम फ्रीडम है आपके पास, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा, यू आर योर ओन बॉस। आपको कोई यहाँ पे बॉस नहीं करने वाला, कोई ये नहीं कहने वाला कि आप हमारे हिसाब से काम करें, मैं आपकी बॉस हूँ, मैं आपकी अपलाइन हूँ, तो मेरे हिसाब से उठोगी, मेरे हिसाब से सोगी, मेरे हिसाब से खाना खाओगी। नहीं, इट इज नॉट अ जॉब एटमॉस्फेयर एट ऑल। वी आर वन फैमिली, वी आर पावर ईगल्स टीम। एंड हमारा जो कम्युनिटी सिस्टम है, हमारा जो टीम सिस्टम है, हमारा टीम कल्चर है, इट इज वेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडली। चॉइसेस ही चॉइसेस है जिंदगी में, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जिस तरह, like I would say कि I was a baby in the business in 2017, but because I got a chance to see it very closely, because अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कोई बेहतरी थी उसके अंदर। क्योंकि रैली जो है वो हर साल आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में जाती है। तो इत्तफाकन 2017 में जो ग्लोबल रैली थी वो दुबई में थी, इट वाज इन यूएई। और जब इतने सारे लोगों को मैंने एक रूफ के नीचे ट्रेड सेंटर में देखा था, it was really something very amazing for me। मैंने इस तरह की चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैंने कभी भी 18,000 लोगों को एक छत के नीचे इतना एक्साइटेड होते हुए, इतना खुश होते हुए, एक दूसरे की सक्सेसेस पे क्लैप करते हुए नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था कि इतनी नेशनैलिटीज इकट्ठे मिलकर इतने प्यार से एक छत के नीचे, विदाउट एनी रेसिज्म, विदाउट एनी लेग पुलिंग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक फैमिली की तरह है। क्योंकि मेरे लिए एक चीज, चाहे आई एम ब्रॉट अप इन यूएई, मुझे पता है हम एक मिक्स कल्चर में रहते हैं। आई हैव नेवर सीन हमने रेसिज्म सीखा ही नहीं है। अव्वल तो बीइंग इन यूएई, वी आर part of a country, we are part of a world where we have not seen racism, because हमारे teachers जो हैं, they were from all nationalities. So alhamdulillah, वो चीज तो I have never seen, but watching it even more closer under one roof and showering love on each other, it was something, a life changing view for me. Or that was the point when I understood the power of this business. Okay, yes, it's absolutely right. This is something that I want to do for the rest of my life. I don't want to say कि मैं इस opportunity के अलावा कुछ और कभी करना चाहूंगी, because अगर यहाँ पर इतना कुछ मुझे मिल रहा है और यहाँ पर सिर्फ मुझे अपनी मेहनत लगाकर काम करना है, तो I should definitely make a plan to work hard and work smart. Your life, your choices in the end of the day. So make your right choices and try to make a decision to work really, really hard and smart in this business. So forever ki jo story hai, I've already told you all ki the goals is so important. सबसे पहली चीज जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही है, goals are very very important thing in our business. बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी में, बिकॉज वो अपने गोल्स के साथ
कनेक्टेड नहीं है, आप उतना टाइम अपने बिजनेस को नहीं दे रहे जो आपका टाइम अगर आप दो तो उसके अगेंस्ट आपको जो है बहुत कुछ अचीव हो सकता है। अब गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, 3 पार्ट्स में आपने उनको डिवाइड करना है। अगर आपके पास आपकी बुकलेट है सामने तो प्लीज उसको अभी मेरे सामने खोल कर, या अगर आपके पास कोई नोटबुक भी है उसके अंदर अपने गोल्स अभी अभी के अभी ओवर द मीटिंग लिखें। आई जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ताकि आप लोग अपनी, अगर किसी के पास पेन कॉपी पेंसिल पेपर नहीं है तो यू कैन जस्ट गेट इट होल्ड ऑफ दैट and I can inshallah, then I would love to see them in the power team. Please send the screenshots or the pictures of your sheets on there so that I can see, I can read your goals, and it'll be very nice for me to know as a leader कि what is important for you. And even for some of the members, if you can write here in the chat box, that will be wonderful to know कि आपकी goals क्या हैं। जिस तरह कहा मैंने कि 3 parts में divide करना है। पर्सनल गोल आपके होते हैं, फैमिली गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आपने इन तीनों को मिक्स नहीं करना। शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो इमीडिएट गोल्स होते हैं, आपने जिनको पूरे एकदम से फुलफिल करना होता है। आपको पता होता है कि ये चीज अगले कुछ महीनों में होनी चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बताऊं, जब मैंने ये फिल इन की थी एरिया तो मैंने फौरन से लिखा था कि मुझे 2000 दिरहम कमाने हैं महीने के, मुझे 2000 दिरहम चाहिए बिकॉज मुझे उसकी जरूरत है। क्योंकि एट दैट टाइम मैंने उस वक्त एक किटी स्टार्ट की हुई थी, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं अपना स्टोर बेसिकली रन करती थी यहाँ पर दुबई में, जुमेरा में, मरकाटो मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट आई हैड माई स्टोर। और जब वो स्टोर मैंने बेसिकली बंद किया था, यहाँ रहने वाले यूएई में काफी लोग इस चीज के ऊपर इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ पर रहना कोई बहुत आसान चीज नहीं है, और रनिंग अ बिजनेस आल्सो इज नॉट दैट इजी। हम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट इन रेंटल फॉर्म, देयर आर सो मेनी हिडन एक्सपेंसेस एज वेल जो हमारे ऊपर होते हैं, जो चल रहे होते हैं हमारे साथ साथ। तो बहुत कुछ था जिसकी वजह से, और प्लस जब आपकी हेल्थ डेट्रिएट हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं तो कोई भी चीज आपसे मैनेज नहीं हो पा रही होती, तो आप ज्यादातर नुकसान में चले जाते हैं। एंड मैंने जब वो बंद किया था, और आई स्टिल रिमेम्बर द डे, चाहे इट वाज अ रिलीफ फॉर मी, आई रिमेम्बर कि इट वाज अ पीस ऑफ रिलीफ कि चलो अब लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन एक डिसीजन और मेक कर लिया था कि बस आगे जिंदगी में कुछ करूंगी नहीं, और बस जो आएगा हाथ में बस उसी पे गुजारा करने की कोशिश करूंगी, विच आई डिड फॉर मेनी इयर्स। लेकिन उन कुछ सालों ने जो मेरे अंदर कमियां पैदा की थी, उन कुछ सालों के अंदर जो मेरे जिंदगी के अंदर गैप्स आए थे, जो लोग मुझे ये बात बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उन पे हंसी आती है इस बात के ऊपर कि एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन टू से कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो आपका अपना कमाया हुआ पैसा होता है उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। आप उसके लिए किसी को आंसरेबल नहीं होते, whether it is to your parent, whether it is to your brothers, whether it is to your sibling, whether it is to your husband, आप किसी को आंसरेबल नहीं होते आपने आपके अपने पैसे के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी से भी पैसा लेके खर्च करते हो, ठीक है, they give us out of the love, affection, but in the end of the day you are answerable। और जब आप ऑलरेडी you're one of the people who have done something in life, complete reliable आप हो भी नहीं सकते। खैर, I did it for many years as I told you। तो मेरे जहन में था कि मुझे 2000 दिरहम चाहिए, I want 2000 दिरहम, और कोई बड़ी सोच नहीं थी। मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। I've always taken myself as a competition that I want to become a better person every single day। So you have to write down now कि आपके लिए वो क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको चाहिए विद इन 3 to 5 months, in next 3 to 5 months। It could also be a holiday। आप शायद एक 5 स्टार होटल में 2 नाइट्स बुक करना चाहते हो, उसके लिए मे बी आपका एक्सपेंस 2500 दिरहम्स आएगा, मे बी 4000 आएगा, डिपेंडिंग ऑन द होटल दैट यू वांट टू गो टू। Whatever it is, in short term, in 3 to 5 months, maybe you want to afford AC अपने माँ बाप के रूम के लिए, मे बी आप अपने लिए AC होगा। There is one of my team member who has done that, you know there are a lot of there is one of my team members, she wanted to buy a phone for her mother। वो शॉर्ट टर्म चीजों में आते हैं ना, आप उनको 3 to 5 months पे इंशाल्लाह फिक्स कर सकते हैं अपनी मेहनत से। सो वो गोल्स जो होते हैं उनको आप फैमिली के लिए कुछ पर्टिकुलरली चाहिए तो वो फैमिली गोल्स में जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आपकी अपनी पर्सनल जात से जिसका ताल्लुक है, कोई कोर्स में भी आप करना चाह रहे हैं,
आप मे बी एजुकेशन में अपने आप को फर्दर सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एज मैटर नहीं करती। इवन इफ यू आर 40+, आप इस टाइम में भी आके अगर अपने आप को एजुकेशन वाइज किसी पोजीशन पे लेके जाना चाह रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। इट कुड बी योर गोल, मे बी आप अपने आप को, मे बी आप अच्छे कपड़े खरीदना चाह रहे हैं, मे बी आप, ऐसा नहीं, आपके जहन में काफी टाइम से चल रहा है कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए या उस तरह की कपड़े, या मेरी वार्डरोब इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर 15-20 सूट ऐसे लगे होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है ना, आपकी जो आपकी पर्सनल जात से जिसका ताल्लुक है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बोलूं तो मे बी आप अपने लिए, अपनी जात के लिए गाड़ी लेना चाहते हो, मे बी आप अपने लिए घर के लिए घर खरीदना चाहते हो, मे बी आप हज करना चाहती हैं, मे बी आप इंटरनेशनल हॉलीडे पे जाना चाहती हैं, मे बी आपके ऊपर कोई उधार है जिसको आप फिक्स करना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई उधार है आप उसको फिक्स करना चाहती हैं। आपने फैमिली गोल्स में फॉर द फैमिली लिखना है, फॉर द लॉन्ग, इन द लॉन्ग टर्म फॉर योर सेल्फ लिखना है, और इन द फाइनेंशियल वन यू हैव टू राइट के ऑन द मार्केटिंग प्लान इन नेक्स्ट 3 to 5 months आप अपने आप को कहाँ देखती हैं manager position. Because when I wrote my financial goal, my main goal in 3 to 5 months was manager. Because I, जैसे मैं आगे move forward करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि manager position पे income potential क्या है, when you go through the marketing plan तो आपको समझ में आएगा कि जो काम basically whatever work you do on the lower positions, if you do that on the manager position, your income is much more. So my main goal, I would say 3 to 5 months, when I wrote down my first step to manager booklet, it was to reach to the manager position, to unlock that by hook or by crook. And long term में I was very clear that I wanted to achieve chairman bonus check. पता भी नहीं था क्या है chairman bonus check, मुझे पता भी नहीं था कि सफायर बोनस क्या है, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रैवल क्या है, मुझे पता भी नहीं था कि 6 figure इनकम कमाई कैसे जाएगी, क्या करना पड़ता है उसके लिए। बट आई रोट एवरी सिंगल थिंग डाउन हियर एंड आई स्टिल हैव माय फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट, आज भी वो मेरे पास है। और मतलब मुस्कुराहट ही आती है देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बस अल्लाह ताला हज करने की तौफीक अता करे। दैट इज स्टिल ऑन माय गोल बोर्ड। सो आपकी जो भी चीज है आप उसको अचीव खुद करने की ताकत रखते हैं विद योर ability, with your work in place, without comparing yourself to anyone. You are your own competition, nobody is your competition. Okay, so you have to fill in and you have to send it in the power team. I would love to read your goals. I would love to read whatsoever is important to you. Just give me 1 second, I need to put this alarm off. So let's move on to the next part. So you can never fail in forever as long as you are consistent in your daily business building. Take 10 minutes to consider what you are really willing to do for, like willing to work for, whatever it is. Let's suppose कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि 1 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में सिक्योरली 1 करोड़ पड़ा होगा, या फिर आपको मैं कहूँ कि 1 लाख दिरहम पड़ा होगा आपके जो हैं, तो क्या करेंगे उस अमाउंट से? वेयर आर यू? हम बहुत बड़ी बात नहीं करते, हम बिलियंस की बात नहीं करते, मिलियंस की बात नहीं करते। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लेट्स से कि आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है आपके बैंक में, और आपके पास, आप उससे क्या करोगे? How can that benefit your life? How can that fix few things in your life? So just consider, just think about it for a while, and then let's move forward. Understanding case credit is very important because CC जो है, this is this business is all about accumulating case credit. So what is case credit? A case credit is our internal currency. Like everyone in USA talks in dollars, in UAE everybody talks in dirhams, in Pakistan everybody talks in rupees. ठीक है? Everyone in forever talks in CC, in case credit. ये कंपनी ने हमारी आसानी के लिए एक करेंसी बना दी है ताकि आपको कन्वर्जन्स करते हुए मुश्किल ना हो, तकलीफ ना पेश आए कि इतने प्रोडक्ट्स के इतने पैसे हो गए, उस कंट्री से इतने हो गए, उस कंट्री से इतने हो गए। कितना टाइम इंसान का वेस्ट हो सकता है ना अगर आप कन्वर्जन्स करने बैठे रहो हर वक्त। सो
Since the business is global, with people from all over the world, having an internal currency was very, very important in the beginning. और ये रेक्समॉन को पता था कि एक टाइम आएगा कि वो सिर्फ यूएसए से निकल के इस चीज को बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी लेकर जाएंगे, वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इफ आज मैं लुबना को कॉल करती हूँ या मैं तजल्ली को कॉल करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ आपने कितना बिजनेस किया इस महीने, अगर लुबना मुझे कहेगी कि मैंने 2 लाख का किया लेट्स सपोज, और तजल्ली लेट्स सपोज मुझे कहती है कि मैंने इस महीने 2000 रियाल का बिजनेस किया, तो मेरे लिए तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लाइक व्हाट डू यू मीन टू से। बट इफ दे से कि मैंने 10 सीसी का बिजनेस किया है, या तजल्ली मुझे कहती है मैंने इस महीने 10 सीसी का बिजनेस किया, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, यू नो। सो दैट इज व्हाई वी टॉक इन सीसीज। सो यूएई के अंदर एक सीसी जो है उसकी रिटेल वैल्यू, जो उसकी फुल प्राइस है, वो है 877 दिरहम्स। और एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको एक सीसी मिलता है 585 दिरहम में। तो जो बीच का डिफरेंस है 300 दिरहम का या 13,000 रुपए का, वो आपका प्रॉफिट है पर केस क्रेडिट। तो जितने सीसीज आप रिटेल करते हो, जितने सीसीज आप बिजनेस में मूव करते हो, दैट इज योर मनी इन हैंड। सो लेट्स से कि व्हाट इज सीसी लाइक, आपको सीसी जो है वो कहां कहां से मिलता है, किस किस तरीके से आप अपने लिए CCs generate कर सकते हो। So there are 3 different ways to generate case credit: by using the product, by recommending the products, which means retailing, by helping other people start their business, which we call sponsoring. इनके थ्रू आप अपने लिए CCs generate कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। कंपनी आपको ये नहीं कहती कि आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको सीसीज नहीं मिलेंगे इन प्रोडक्ट्स के। आप अपने घर के यूज के लिए भी चाहे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आपको केस क्रेडिट्स दिए जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एंड एनीबडी दैट यू स्पॉन्सर इन द बिजनेस, उनको भी सीसीज दिए जाते हैं और इक्वली आपको भी सीसीज दिए जाते हैं। यू नो, चाहे वो 10 जनरेशन डीप डाउन ही क्यों ना हो, टिल दे रीच टू द मैनेजर पोजीशन, तब थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं, बट अप टिल एंड अनटिल people you have sponsored and your team members have sponsored, you get the points equally. उनको तो मिलते ही मिलते हैं, आपका भी बेनिफिट है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक्टिव रहने का, that you also get the case credit. So आप सीसीज जो हैं, अब लेट सपोज कि हमने 4 सीसी एक्टिव की बात करनी है, ठीक है। आप होलसेल क्वालिफाइड हो गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर अनलॉक हो गया माशाल्लाह, आप 35% प्रॉफिट्स पे क्वालिफाई हो गए हो, आपका स्पॉन्सरिंग बोनस अनलॉक हो गया, नाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर टीम एंड नाउ यू कैन आल्सो स्टार्ट गोइंग इंटरनेशनल। सो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर assistant supervisor level, 4cc is our business building principle. जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता वो अक्सर इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब नहीं हो पाता। 4cc एक बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि एक दफा आपको ये एक्टिविटी करनी आ जाए, आपको किसी को सिखाना बहुत आसान हो जाता है। It becomes very easy for you to create that duplicatable system in your own business. So if you can develop the skill to teach people to do the same, you will be able to build a very, very strong and stable income in forever. So this is something that you have to master. Once you have become an assistant supervisor, you have to keep your focus on building a 4cc business month in, month out. And this is how you are going to learn every single thing. So how do we are going to do 4cc? Okay, the question is कि हम 4cc कैसे करेंगे? First of all, ठीक है, we have to use the product, because personally speaking, अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, और मैं कहती हूँ जी मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने और मैं जो हूँ बस मैंने प्रोडक्ट सेल करने हैं और मैं बस जो हूँ यही काम करने आई हूँ इस अपॉर्चुनिटी में, तो मैं जो हमारा एक बिजनेस ट्रायंगल उसको ब्रेक करती हूँ, राइट। यूजिंग द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट। मैं कभी भी किसी को कोई चीज रेकमेंड नहीं कर सकती अगर मैंने पर्सनली वो चीज इस्तेमाल नहीं की। मैं किस तरह इतने कॉन्फिडेंस से अक्सर आप लोगों को पावर टीम के अंदर चीजें बता रही होती हूँ, मुझे कैसे पता होता है? अब जाहिर सी बात है, मैं इस अपॉर्चुनिटी से पहले तो इसका पार्ट नहीं थी, मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में अपॉर्चुनिटी से पहले तो नहीं पता था। वो तो एक और बात है कि पिछले
20 साल से बिफोर आई वॉज पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आई वॉज यूजिंग टूथ जेल। मुझे पता भी नहीं था कि इसके साथ कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है इस टूथ जेल के साथ। माई डॉक्टर रिकमेंडेड दैट टूथ जेल टू मी, माई डेंटिस्ट गेव दैट टू मी। एक पर्टिकुलर फार्मेसी से वो मिलता था और वो स्पेशली मैं फार्मेसी से वही टूथ जेल परचेज करने में उस फार्मेसी में जाया करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस टूथ जेल के साथ अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है। और जब मैंने वो टूथ जेल देखा अपने बिजनेस बॉक्स से निकाल के, तो मेरे एक इम्यूजमेंट सी भी फील हुई कि इस टूथ जेल को तो मैं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइक यू नो। सो आप जो हैं, लेट्स से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो प्रोडक्ट्स हैं खुद इस्तेमाल करने हैं। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपका किसी को उसके बारे में बताना, एक तो आप सच्चे होते हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे होते, आप ऑनेस्ट होते हैं। दूसरा, आपका लव ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दूसरे के दिल में लव ऑफ प्रोडक्ट डालने में बहुत हेल्प आउट करता है। और आपका किसी के दर्द को महसूस करना भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका प्रोडक्ट के ऊपर यकीन हो। अब लेट्स से कि मेरी मदर हैं, अल्लाह ताला जो है उनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर मेरी मदर को कहीं पे पेन है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे मालूम है कि लाइक मैंने उनको क्या रेकमेंड करना है। बिकॉज एक तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर बीन ऑलरेडी यूज्ड बाय हर। तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर कि उस वक्त उनको अपनी फिंगर जो है वो स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड माई मदर हैज यूज्ड B12 बिकॉज B12 का जो आपका रोल है, जब आप पढ़ते हो उसको, जब आप सप्लीमेंट्स को पढ़ते हो, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हो कि ये किस चीज के लिए, तो आपको पता चलेगा कि इट इज फॉर द नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा होता है B12। तो B12 माय मदर यूज्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट पेन। अब वो एक मेरी टेस्टिमोनियल, मेरी फैमिली टेस्टिमोनियल बन गया। मुझे लेट्स सपोज कि कोई और मिलता है और वो मुझे यही प्रॉब्लम बताता है, या ऑनलाइन किसी ने डाला होता है, किसी ग्रुप में डाला होता है, मेरा उनको बताना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब इन कंपैरिजन टू वन पर्सन जो सिर्फ अपने पास पड़ी हुई B12 बेचने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास अपना पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस है। तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आप प्लीज ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। माय मदर हैज यूज्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट विल बेनिफिट यू। दो चीजों का फायदा, एक, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ दुआज फ्रॉम पीपल कि आपने उनको हेल्प आउट किया विद देयर प्रॉब्लम। सेकेंडली, आपको इनकम भी आ रही है, राइट। सो एक और थर्ड बहुत खूबसूरत बात है कि आपकी एक रेप्यूटेशन भी बन रही होती है। जब आप इस तरह के इंसान नहीं होते कि जो सुबह उठा, रात को सोया, सिर्फ अपनी जात से उसका ताल्लुक हुआ, उसने कमाई की, बैंक में पैसा डाला, खा लिया खाना और सो गया, वापस उठ गया, आप उन लोगों में काउंट नहीं होंगे। आप उनसे अलग हैं। आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपकी जिंदगी का मकसद दूसरों को बेनिफिट पहुंचाना भी है। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज द प्रोडक्ट। देन यू कम टू द रिटेल पार्ट, राइट। वंस यू रिटेल द प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू अगेन जनरेट योर CCs। लेट्स से कि मैंने 20 क्लाइंट बनाने हैं, ठीक है। लेट्स से अब 20 क्लाइंट ओवरनाइट तो नहीं बन सकते। अब 20 कस्टमर अगर मेरे मैंने अपना एक हिसाब लगाया हुआ है कि अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि $24 पर मंथ अगर आपके 20 कस्टमर करते हैं, अगर 58 दिरहम्स अगर आपका एक क्लाइंट आपसे बाय करता है प्रोडक्ट 58 दिरहम की, लेट्स से कि एक स्क्रब हो गया, ठीक है, 58 का, 60 का स्क्रब आता है, 58 का एलोवेरा जेली आती है 58 की। 58 की अगर एक एलोवेरा जेली जो है, आप सोचो अगर 20 मल्टीप्लाइड इनटू आई वुड से 58, तो बन जाते हैं 1160 दिरहम्स। मीन्स के 2 CC मेरे हो गए रिटेल। दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इट। कि आप एक, मैं यहाँ एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, आपके पास तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। लेट्स से कि आपके पास सिर्फ एलोवेरा जेली परचेज करने वाले सिर्फ 20 लोग हो जाते हैं मंथली बेसिस पे, या आपके पास किड्स वाइटमिन लेने वाले 20 लोग हो जाते हैं, आपके 2 CC तो वहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। और पर CC आप कितनी अमाउंट इनकम अर्न करते हो? 13,000 रुपए। आप कमाते हो 300 दिरहम। 300 दिरहम की बहुत वैल्यू है भाई। आप बाहर जाओ अपने बच्चों को लेकर, आप उनके ऊपर खर्चा करना चाह रहे हो, 400-500 दिरहम में आप उनको बड़ी लेविश सी मजेदार सी ट्रिप करा के वापस ले आते हो, यू नो। अगर आपका वीकली गोल भी बैक ऑफ द माइंड ये कि आपने 300 से 500 दिरहम इस हफ्ते कमाने हैं, गोल बनाए अपना कि हमने ये काम करना है, हमने इस तरीके से इसको बिल्टअप करना है। आप लेट सपोज आप रिक्रूट करते हो किसी को अपने बिजनेस के अंदर, रिक्रूटमेंट करने की कंपनी आपको बोनस पे करती है, कंपनी अपने आप से आपको बोनस पे करती है फॉर दैट।
कंपनी कहती है हम आपको पैसे देते हैं ताकि क्योंकि आप किसी इंसान की जिंदगी में बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, आप अपना वक्त उस पर स्पेंड कर रहे हो, यू डिजर्व दिस बोनस। और वो बोनस आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होता है 350 दिरहम, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने अपनी मेहनत से अपना टाइम लगा के, टाइम इज मनी, मैं अपना टाइम लगा के अपने दिल में किसी का दर्द रख के मैं किसी 2 लोगों को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करती हूँ, राइट। आई एम एबल टू स्पॉन्सर 2 people। 350 multiplied into 350 is how much? It is easily 700 dirhams। 700 dirhams इन पाकिस्तानी रुपीज आज की करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपए बनते हैं। 30,000 रुपए तो शायद मेरे ख्याल से इस वक्त किसी बहुत अच्छी सैलरी कोई अर्न कर रहा। कल एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, शी इज एक्चुअली लुकिंग इनटू द बिजनेस। उसने मुझे बताया कि वो कॉल सेंटर में काम करती है सिर्फ 25,000 रुपए कमाने के लिए, उसकी डे और नाइट की जॉब्स होती हैं। शी इज अ मैरिड वुमेन, शी इज अ मदर एंड शी हैज टू डू नाइट शिफ्ट्स just to make 25,000 rupees। एंड आप यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हो, अपना वक्त स्पेंड करते हो, उनके ऊपर टाइम लगाते हो, कंपनी आपको 30,000 रुपीज दे रही है। कंपनी इज पेइंग यू 700 dirhams in hand। It is a big money, value the money, you know, and try to do the work from heart। So for example, आपकी 3 एक्टिविटीज हो गई। using the product you get the points, retailing the products you get the points, and if you sponsor somebody into the business you get the points। I hope this is clear up till here। So let's move forward। You can never fail in forever as long as you are consistent in your daily business building system, whatever you are following through social media, through your, you know, if you give flyers out, whatsoever activities you are doing, maybe you're making phone calls, maybe you're doing stories, so take 10 minutes to consider what you are you know, really looking forward to work towards। So if you master the 4cc habit and teach your team to master the 4cc habit, everything on the marketing plan will become very easy for you to achieve। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी इंसेंटिव को क्वालिफाई करना अगर आपको 4cc की हैबिट हो गई। अगर ये आपको हैबिट बन गई ना आपकी कि आपको नींद ना आए उस कि भाई मंथ का एंड होने वाला है और मैं 4cc एक्टिव नहीं हूं। एक चीज यहां मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी, एक्टिव होने का मतलब होता है कि 1cc मिनिमम आपके अकाउंट से गुजरना चाहिए। लाइक आपके अकाउंट से 1cc की परचेज होनी ही होनी चाहिए, चाहे आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके सेल कर दो या पर्सनल यूज करो। मेरे घर के तकरीबन जितने भी आइटम्स हैं वो मैं अपने फॉरएवर के यूज करती हूँ, तो मेरे तकरीबन 3 से 4cc के प्रोडक्ट्स तो मेरे घर के ही बन जाते हैं। सप्लीमेंट्स हो गई, जो पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हो गए, आप कह लें कि सोप, कंडीशनर, शैम्पू, इन सबको मिला के, और इवन यू नो द स्किन केयर सिस्टम एंड एवरीथिंग, उन सब चीजों को मिला के बच्चों का और मेरा तकरीबन 3 से 4cc मंथली मेरा अपना पर्सनल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आप अगर 1cc भी अपने अकाउंट से मूव करते हो तो वो आपके एक्टिव में इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी को स्पॉन्सर करो बिजनेस के अंदर, उनके सीसीज आपको मिलेंगे तो जरूर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया इन दी अपॉर्चुनिटी, आप 4cc हो, दैट इज ट्रू, बट आप एक्टिव नहीं हो। एक्टिव कंपनी कहती है कि अगर आप आपके अकाउंट से कोई प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा, मींस आप एक्टिव बिजनेस ओनर नहीं हो। अब आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड दिस इज अ हुक, दिस इज नॉट अ हुक, this is just, they just want to tell you that you have to be a genuine person, an honest person, and to be that you have to move the products, you have to use the product, and you have to retail the products, recommend these products to people, otherwise you will not be able to sustain in the business for a long time। So unlocking the potential of marketing plan। अब आगे मैं marketing plan आपको दिखाने वाली हूँ। आपने guys, you can't see my screen, I'm getting a message that you can't see my screen। How many of you can't see my screen? Acha, I can see perfectly fine, thank you so much for letting me know। अच्छा, unlocking the potential of the marketing plan। marketing plan एक ऐसी चीज है जो आप बिजनेस का पार्ट बने हैं, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर मार्केटिंग प्लान आपके फिंगर टिप्स पे नहीं आता, बिलीव मी, आप ना किसी को बिजनेस समझा सकते हो
और आप कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी भी कर जाओगे, बिकॉज जब आप किसी से बिजनेस की बात कर रहे होते हो तो आपका मार्केटिंग प्लान आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। अब मुझे रात के बीच में भी अगर कोई जगा दे, मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और मुझे कोई उठा दे और बोले बीनेश मार्केटिंग प्लान बताओ, और बिलीव मी आई जस्ट आस्क फॉर वन पीस ऑफ पेपर एंड आई कैन ड्रॉ द होल मार्केटिंग प्लान इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो इतनी आपकी ग्रिप इसके ऊपर होनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान के ऊपर ग्रोथ किस तरीके से की जाती है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ द मार्केटिंग प्लान, ऑल बोनसेस आर बेस्ड ऑन रिटेल, ठीक है, और आपकी रिटेल जो भी हो रही है, जितने भी बोनसेस पे किए जाते हैं, यू मूव द प्रोडक्ट्स आइदर बाय स्पॉन्सरिंग पीपल, यू मूव द प्रोडक्ट्स आइदर बाय रिटेलिंग द प्रोडक्ट्स, you move the products either by purchasing them for yourself. As on assistant supervisor level, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, there is a very beautiful benefit that the company has given कि आपको 5% बूस्ट भी दिया जाता है कि आपके अकाउंट से अगर एक सीसी की परचेज हुई है तो वो 5% आपको अपने पे चेक में मिलता है, you know. So no one can bypass you on the marketing plan. आप let's say कि आपकी कोई टीम मेंबर है, आपने उसको स्पॉन्सर किया, ठीक है, they can grow more in income, लेकिन they cannot bypass you till they reach to the manager position. After they have reached to the manager position, company says जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना सक्सेस कमाएगा, ठीक है. तो once you have become a manager, you can even go above of your manager, but you will always come as their part of their team. आप उनके टीम से skip out नहीं होगे. ये एक beauty है marketing plan की कि once you have made somebody stronger, they will be your team member. लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि maybe they may be making more money than you. So global opportunity, already know about it कि आप खाली एक country पे महदूद नहीं है. आप जिस country में अपने आप को जितने पर फैलाना चाहते हैं, जितना उड़ना चाहते हैं, आप उड़ सकते हैं. Uncapped income है, कोई कैप नहीं लगी हुई कि 10,000 रुपए ही कमाने हैं, 30,000 कमाने हैं. आपकी मर्जी है, आपने जितने कमाने हैं, जितनी मेहनत कर लोगे उतनी इनकम अर्न कर लोगे, ठीक है. ऑल पोजीशंस आर परमानेंट. आप 10 साल के बाद भी सो के उठ के आओगे, आपकी पोजीशन वहीं की वहीं होगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर. दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ फॉरएवर. All positions are permanent. Your income and promotions are up to you. कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. आपकी अपलाइन आपकी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके प्रमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती. आप प्रमोशन करना चाह रहे हो, वो आपको स्टॉप नहीं कर सकती. यू आर हैविंग दैट इन योर हैंड. यू कांट बी फायर्ड बाय एनीबडी. कोई आपको इस अपॉर्चुनिटी से फायर नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता कि आप काम नहीं करे तो बस आप निकल जाएं. कोई आपसे ये नहीं कह सकता. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केटिंग प्लान. So this is how the marketing plan looks like. I know कि new starters के लिए काफी एक वो लगता है कि jigsaw सा कि oh my god यहाँ पे तो बहुत कुछ numbers नजर आ रहे हैं, और if somebody is like me and you're number dyslexic तो आपको होगा कि oh my god यहाँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतने सारे numbers नजर आ रहे हैं. But believe me, with the time you will get the grip of it. इतना आसान हमारा marketing plan है, ठीक है. So I will just move forward and I'll show you the very first part of the marketing plan, which is assistant supervisor level. How many of you are assistant supervisor here? कितने लोग यहाँ पर assistant supervisor हैं? Please write in the chat box. ठीक है, perfectly fine. Huge well done to everybody who has unlocked the marketing plan on you and you have become part of this amazing business opportunity. So this is our marketing plan ka very first part, which is assistant supervisor. One thing that I will strongly suggest that you learn and learn it very well. Okay, if you don't know this yet or don't know how to explain it simply, this is the first thing that you need to learn. जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये आपने सीखना है. So when you start your business, you are assistant supervisor, okay? Which means you get 35% of profit, 35% of discount. Call this, a team leading. आप कह लो कि आपका जो होता है as a boost, आप बोल लो कि कंपनी की तरफ से 5% एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, right? On your every single sale that is happening. अगर आप 4cc एक्टिव नहीं होगा तो आप होगे तो ये 5% नहीं पे होता आपको, ठीक है. तो आप 30% पे ही रहोगे. लेकिन अगर आप 4cc एक्टिव होते हो तो ये 5% आपके पेचेक में आपको एडिशनल दिया जाता है, राइट.
सो आपके दो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होते हैं जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। एक, आपने किसी को बिजनेस में स्पॉन्सर किया 2cc पे, तो आपने अपना स्पॉन्सरिंग बोनस कमा लिया, राइट। और आपने अगर अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेल ऑफ किए तो आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया। तो आपकी दो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती हैं एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 2cc के प्रोडक्ट्स रिटेल किए। अभी मैंने यहाँ पे, मुझे कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कि 1cc यूएई के अंदर कितना आप प्रॉफिट कमाते हो 1cc के ऊपर? रुपीज में भी बता दें और मुझे दिरहम्स में भी बता दें। 1cc जब आप रिटेल करते हो या सेल करते हो, आप उसके ऊपर कितने अमाउंट जो है वो अर्न करते हैं? रुपीज में भी बताइए और दिरहम्स में भी। ठीक है, 300 दिरहम हम कमाते हैं 1cc के ऊपर। वेरी गुड आसिया, वेल डन। और रुपीज में कितने कमाते हैं? कोई मुझे पाकिस्तान से बताए कि आप 1cc जब रिटेल करते हैं तो आप कितनी अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करते हैं व्हेन यू सेल 1cc के प्रोडक्ट्स एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर? 13,000 पाकिस्तानी रुपीज, वेल डन। अगर देखा जाए तो आप इस महीने 2cc प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, 2cc के आप प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, तो आप बनाते हैं 13,000 प्लस 13,000, राइट। कितने हो जाते हैं? 26,000 रुपए आपके हो जाते हैं, आपका रिटेल प्रॉफिट। और लेट सपोज इसी महीने आप कहते हैं कि जी मैंने 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट। तो एक इंसान को स्पॉन्सर करने का असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितनी पैसे आपको मिलते हैं? अभी मैंने बताया था मीटिंग के दौरान ही कि आपको कितना स्पॉन्सरिंग बोनस एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर पे किया जाता है। 313 दिरहम। 313 दिरहम्स जो हैं आपको, इट इज एक्चुअली 334, बट आई विल जस्ट 334 जो है आपको मल्टीप्लाई करना है पाकिस्तानी रुपीस के साथ, तो आपको मिलते हैं तकरीबन 15,000। ठीक है, नियर टू 15,000 पाकिस्तानी रुपीस आप मेक कर रहे होते हो अपना स्पॉन्सरिंग बोनस। तो अगर आपने 2 लोगों को रिक्रूट किया, ठीक है, तो 15 इंटू 15 इज 30, 15 प्लस 15 इज 30। तो यानी कि 26,000 के अंदर उसको ऐड किया, उस अमाउंट को आपने 30,000 को आपने ऐड कर लिया 26,000 के साथ। 56,000 रुपीज यू मेक बाय एंड ऑफ द मंथ, सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके ऑन एन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। Isn't that wonderful? Isn't that amazing? You know, one of my team member, he's a student, or mashallah, in his very first month of his business, he was able to sponsor 4 new team starters. 4 लोगों को sponsor किया, and he was able to generate 70,000 Pakistani rupees. He was able to pay his debt. उधार जो उसने लिया हुआ था, उस उधार को उतारने के लिए उसका पहला पे चेक ही इनफ था। So this is the potential of this position on the marketing plan. दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपने रिटेल किए 4cc के प्रोडक्ट्स, ठीक है, 4cc के प्रोडक्ट्स आपने रिटेल किए, तो आपका प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट आप मार्जिन आता है वो है 300, राइट, ऑन पर cc। तो 300 को मल्टीप्लाई किया 4 से 1200 दिरहम हो गए, ठीक है। 1200 दिरहम को अगर हम मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीस के साथ तो बन जाते हैं 52,000 पाकिस्तानी रुपीस, राइट, जो प्रॉफिट मार्जिन है। तो आप देखो कि अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे रिटेल पे हैं। अगर लेट सपोज आप उसमें थोड़ी और मेहनत डाल के उस महीने में 3 लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आप 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 45,000 हो गए, ठीक है। 45,000 के ऊपर अगर आप इसको प्लस कर लेते हैं विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट you're generating, ठीक है, तो आप अंदाजा लगाओ 99,000 पाकिस्तानी रुपीस यू मेक विद दिस एग्जांपल टू। रिटेलिंग 4cc of products, recruiting 3 team members, you make 99,000 Pakistani rupees. 99,000 Pakistani rupees over 12 months is 1.1 million Pakistani rupees. Near to 1.2 it is. 12 महीने की एक्टिविटी, सिर्फ इस एग्जाम्पल पे ही फोकस कर लिया जाए तो कोई पोजीशन की बात नहीं हो रही। पोजीशनें तो बढ़ेंगी, जितना काम करोगे पोजीशंस बढ़ेंगी, सुपरवाइजर पे जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर पे जाओगे, मैनेजर पे जाओगे, लेकिन वो बात है ना कि कंसिस्टेंसी, अपने साथ एक अहद और अपनी वो मेहनत जो है उसको उस लेवल का रखना। बिजनेस से फ्लक्चुएट होता है, अप जाएगा डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा। मे बी 99,000 के बजाय 1.5 लाख पे पहुंच जाओगे किसी महीने, 2 लाख पे पहुंच जाओगे किसी महीने।
right? Believe me, yes, just investment of 1251 dirham once in your lifetime, just once in your lifetime. कोई भी नहीं कह रहा कि हर महीने पे करो. मुझे आज कोई बोले बीनेश हर महीने 1251 दिरहम पे करने हैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट रहने के लिए, आई विल पे दैट. Wallahi, I will pay that. Is because I know the reward that I will get by being consistent here, right? So example 3 को देखते हैं. अगर आप 4 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, ठीक है, आपने बनाया 13,000 रुपया एक सीसी पे, तो आपने 4 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल किए, तो आपने बना लिया जी 52,000 या 54,000 एज पर करेंसी रेट. अभी 54,000 आपने बना लिया, राइट? 4 सीसी को रिटेल करके आपने 4 लोगों को रिक्रूट किया, 99,000 हो गए, राइट? सो इसी तरीके से, नहीं सॉरी, 4 लोगों को रिक्रूट किया तो इट विल बी मोर, इट इज लाइक अबाउट 60,000 फॉर 4 people plus it was 54,000. So how much you make from this activity? 1,14,000 रुपए. 4 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर दिया, 4 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल कर दिए. इसके ऊपर इंसेंटिव चल रहा है कंपनी का 10 सीसी का, कि आप 4 लोगों को रिक्रूट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, आप 4 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हो, तो कंपनी आपको इंसेंटिव भी दे रही है इसके टॉप अप पे 10 सीसी का, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर. सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए है वो इंसेंटिव. Wouldn't you work hard? I mean, you should definitely, right? So let's move forward to the next level, which is 38%. As soon as you become assistant supervisor, I would suggest कि आप फौरन से कोशिश करें कि you move on to the supervisor level. So to move up through the marketing plan, it is all about accumulating case credit. जैसे मैंने पहले बताया आपको, the next position on the marketing plan is supervisor. Okay, so to get to supervisor, हमें क्या करना है? We have to accumulate 25 CCs over 2 months. ठीक है, अब 25 CC over 2 months. So we talk about the importance of 4 CC. आपने देख लिया, you will see how simple it is to get to the promotion. अगर आप 4 CC करने की ताकत रख लो और सिखाने की भी ताकत रख लो. सिखा तो इंसान तभी सकता है ना जब खुद पर्सनली कर रहा हो. जब तक कोई काम पर्सनली आप खुद नहीं करते तो आप सिखा भी नहीं सकते. मैं तो नहीं सिखा सकती भाई. मैं सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी खुद करती हूँ जाके, फिर मैं आके आप लोगों को बताती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात में वजन ही नहीं आ सकता कि आप जब कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात के अंदर वो वेट ही नहीं आ सकता जब तक आपने पर्सनली वो चीज एक्टिविटी में ना लाई हो और पर्सनली आप वो चीज खुद ना करते हो. तो 4 CC सिखाई तब जा सकता है जब आप खुद कर रहे हो, और ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है which can be duplicated. So the pic shows you over here. You will be doing 4 CCs. ठीक है, this is you. आप 4 CC कर रहे हो, और आपका लेट्स सपोज एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 CC कर रहा है, आपका दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 CC कर रहा है, आपका तीसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 CC कर रहा है. टोटल कितने हो जाते हैं? 4 मल्टीप्लाइड इनटू 4 कितने होते हैं? How much is 4 multiplied into 4? 16. 16 CCs over 1 month you are able to achieve. 16 CCs. This is the power of marketing plan. This is the power it's of 11 o'clock. So आपका supervisor achieve करना बहुत आसान हो जाता है if you learn to do 4 CC and you then teach it to the other people. For example, let's follow the example here. अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट्स कुछ मैं बता दूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू द एग्जांपल. एक तो आप 35% से 38% पे आ जाते हो, राइट? दूसरा बेनिफिट होता है कि आपका स्पॉन्सरिंग बोनस भी बढ़ गया है. अब यहाँ पे कोई सुपरवाइजर है तो कोई मुझे बता सकता है कि ऑन अ सुपरवाइजर लेवल आपको कितना स्पॉन्सरिंग बोनस कंपनी पे करती है ऑन स्टार्टिंग अ न्यू टीम स्टार्टर? मुझे पर्सनली पता है, लेकिन आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू ऑल. आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को क्या पता है. हाउ मच डू यू गेट? On an assistant supervisor level, you get around 15,000, right? But how much do you get on the supervisor level? I'm actually not able to see the comment. Yeah. Anybody here who can tell me कि supervisor को कितना sponsoring bonus दिया जाता है to start a new team member in the business? You can write in the chat box. No supervisors here? Do we have only new team starters? It is 414 dirhams. ठीक है, 414 dirhams को अगर हम आज की करेंसी रेट से देखें तो it is 18,000 पाकिस्तानी रुपीस. ठीक है, तो 18,000 पाकिस्तानी रुपीस जो हैं
आपको दिए जाते हैं एक टीम मेंबर को स्टार्ट करने के लिए जब आप सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं, यानी कि आप 15,000 से एकदम से जंप करके 18 पे आ गए हो, राइट। अब 18,000 पे आप आ गए हो, अब आगे जाते हैं तो आपका थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी अनलॉक हो गया। अब क्या होता है ट्रेडिशनल कंपनीज के अंदर कि लेट्स सपोज ये आप हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्ड कर रहे हो, यू हैव स्पॉन्सर्ड 3 टीम मेंबर्स इन योर बिजनेस, whatsoever is moving through the business of your team member that is generating profits, right, moving the products, तो उसका एक परसेंटेज जनरेट होता है जो कंपनी नॉर्मल कंपनीज अपने पास ले जाती हैं, ठीक है। बट इन दिस कंपनी गिव्स दैट थर्ड 3% टू यू, that is your group bonus, that is your team leading bonus, that is given to you because you are leading a team, right? And that will only happen if they are able to make a paycheck. If your downlines are not making a paycheck, they are not generating their 4 cc's, this 3% will not happen, okay? This 3% will only happen once they are also making their paychecks, once they are also doing their activities for the growth, and then company pays you 3%. This is your additional bonus on the supervisor level. अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, रिटेल किया सुपरवाइजर ने 38% पे, सुपरवाइजर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ जाता है, पहले 13,000 था, ठीक है, और सुपरवाइजर के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 333 दिरहम्स। 333 दिरहम्स होते हैं आपके पाकिस्तानी रुपीज में 14,500 रुपए, ठीक है। 13,000 से 14,500 रुपए अब आप कमा रहे हो ऑन अ सुपरवाइजर लेवल। और उसके अलावा आपका स्पॉन्सरिंग बोनस भी बढ़ गया, स्पॉन्सरिंग बोनस आपका हो गया तकरीबन 18,000 पाकिस्तानी रुपए, और आपका टीम लीडिंग बोनस भी एडिशनल आपके पास आपके ऐड हो गया इफ योर टीम इज वर्किंग अराउंड यू एंड यू आर हेल्पिंग देम टू ग्रो एज वेल। तो रिटेलिंग 2cc एज अ सुपरवाइजर अगर देखा जाए तो आप कितना कमाते हो, आपका जो रिटेल का प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है एंड इट इज 14,500। तो 14,600 को अगर हम प्लस करें ट्वाइस, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सो सॉरी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस कि हम बच्चों के अराउंड ही इसको कर रहे होते हैं। सो 29,200 जो है आपको मिलता है 2cc रिटेल करने पे ऑन अ सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। जब आप रिक्रूट करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे तो आप सोचें कि जब आपके पास 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर स्पॉन्सर हो रहे हैं, आपका स्पॉन्सरिंग बोनस है 414 दिरहम्स व्हिच इज अराउंड 18,000 पाकिस्तानी रुपीस, राइट। 18,000 Pakistani rupees multiplied into 3 and plus your retail profit, it was how much? If somebody can tell me in the chat box, retail profit कितना था? How much was the retail profit for the supervisor? 29,000. Thank you. Plus 29,000 जो है हमने ऐड कर लिया इस एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। और आपने देखा है यहाँ पर कि आपके 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ठीक है, और वो लेट सपोज कि वो 4 सीसीज कर रहे हैं, तो टीम लीडिंग बोनस कितना होगा 3% ओवरऑल एक्टिविटी का? If somebody can tell me, if somebody is a supervisor or manager, they can calculate कि अगर आपकी टीम में लेट सपोज कि 3 लोग 4 सीसी की एक्टिविटी कर रहे हैं, 4 multiplied into 416 multiplied into 877 multiplied into 3 divided by 100, it is 420 dirhams additional, ठीक है। 420 dirham additional which is in Pakistani rupees 18,500 team leading bonus, प्लस आपने कर लिया उसको 29,000 के साथ जो आपने कमाया था क्या करके, रिटेल करके। फिर आपने जी स्पॉन्सर किया 3 लोगों को, आपने कमा लिया 54,000, ठीक है। लेकिन 54,000 इज फॉर 3 रिक्रूट्स, या 54,000 आपने 3 रिक्रूट, तो 1,01,000 आपका हो गया सिर्फ इस एक्टिविटी को करके, ठीक है। ये मार्केटिंग प्लान बहुत रिवॉर्डिंग है अगर इसको वर्क राइट तरीके से किया जाए और फुल फोकस के साथ किया जाए, then only it's rewarding. So let's move on to the next level which is assistant manager position. Assistant manager position के ऊपर आपको करना होते हैं 75 CCs over 2 consecutive months. आपको कोई भी प्रमोशन मार्केटिंग प्लान पे अचीव करना है, आपको 2 consecutive months में उसको अचीव करना है, सिवाय मैनेजर पोजीशन के लिए
जहां आपको मैं आगे जाके बताऊंगी there are 2 ways of doing manager. So this is 75 cc's in 2 consecutive months. Again, this is not just you alone, okay? It's you along with your whole team. So you are now 43% off on the products. So for every 1 cc that you retail, you make about 456 dirhams. Okay? And what you get as your sponsoring bonus as well, aapka sponsoring bonus bhi is around 480 dirhams on assistant manager position. Aapka team leading bonus has now rise to 5% to 8%, depending on your team members position, because once you reach to assistant manager, you might have helped some of your team members to reach to supervisor. Maybe you have helped some of new assistant supervisors to get started. So depending on the positions, you get the team leading bonus. राइट? सो असिस्टेंट मैनेजर को करने के बेहद बेशुमार बेनिफिट हैं. एकदम से आप जंप अप करते हो ऑन द मार्केटिंग प्लान, आपकी एकदम से 5% की इनकम राइज होती है, डिस्काउंट राइज होता है, आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिलने लग जाता है. तो एक सीसी जो असिस्टेंट मैनेजर है, अगर एक सीसी असिस्टेंट मैनेजर रिटेल करता है तो उसकी प्रॉफिट कितनी है? इफ एनीबडी कैन टेल मी हियर. How much do you get as an assistant manager once you retail 1 cc? It is 377 dirhams. ठीक है, per cc आप कमाते हो, which is in Pakistani rupees around 16,500 रुपए. और उसके ऊपर कितने थे? 14,600 रुपए ऑन सुपरवाइजर लेवल. तो आपने देखा कि 2,000 रुपए आपके बढ़ गए असिस्टेंट मैनेजर पे, जब आपने वही एक्टिविटी करी जो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कर रहे थे, सुपरवाइजर पे कर रहे थे, अब आप रिटेल कर रहे हो असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, तो यू आर मेकिंग 16,500 रुपीज, राइट? 16,500 rupees you make on retail. Okay, I'll just write it down so I don't forget. And then आपका स्पॉन्सरिंग बोनस भी बढ़ जाता है ना. स्पॉन्सरिंग बोनस कितना हो गया? 480 dirhams. 480 dirhams कितना होता है in rupees? 21,000 Pakistani rupees. 21,000 plus है, लेकिन I'm writing 21,000. आपका recruit bonus होता है. Means you are sponsoring somebody, so you get per person 21,000 Pakistani rupees. On assistant manager आपका टीम लीडिंग बोनस 5% और 8%. तो अब इस एक्टिविटी को थोड़ा ऐड करके देखते हैं इस एग्जांपल को, कि रिटेल अगर आपने 2 सीसी प्रोडक्ट्स किए हैं, ठीक है, 2 सीसी प्रोडक्ट्स अगर आपने रिटेल किए हैं, 16,500 मल्टीप्लाइड इनटू 2 इज अराउंड 33,000 पाकिस्तानी रुपीस, राइट? 33,000 के ऊपर अगर आपने लेट सपोज 3 लोगों को रिक्रूट कर लिया, 21,000 ईच पर्सन आपको दिया जा रहा है, राइट? 21,000 जब आपने ईच पर्सन पे 96,000 रुपीज आपने इतनी सेकंड एक्टिविटी तक बना लिया. अब टीम लीडिंग बोनस अगर आप कैलकुलेट करो, टीम लीडिंग बोनस लेट सपोज आपका विद योर टीम एंड कंप्लीट ग्रुप बोनस इज अबाउट, लेट्स से इज अबाउट 3.75 मल्टीप्लाइड इनटू 44, 66 प्लस हो जाएगा, ठीक है? 66,000 को जब आप ऐड करते हैं तो आप ऑन एन असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे होते हैं by doing just this simple activity that you can see on the screen. ठीक है? So this is what you are supposed to duplicate. For every new assistant supervisor you recruited, you get a profit. For every leading that you're doing for your team, helping them to grow as well, to generate income for themselves, you get a team leading bonus. For every single thing that you retail, you get the retail profit in hand. For every single thing that you use for personal use, you're getting 43% of a discount on that. You get? So as an assistant manager, you can easily make 1.5 lakh se 2.5 lakh Pakistani rupees without any second thought, you know. But in the end of the day, yes, you have to do the activity. So on the manager position, this is the core position on the marketing plan. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 तरीके हैं मैनेजर को करने के. आप 2 मंथ में 120 सीसीज कर लें, या फिर आप 4 मंथ्स के अंदर 150 सीसीज कर लें. रूल ऑफ अचीविंग एनी पोजीशन ऑन द मार्केटिंग प्लान इज कि आपको 4 सीसी एक्टिव पर्सनली होना है, अदरवाइज आप रिकग्नाइज्ड मैनेजर नहीं बनोगे.
आप अनरिकग्नाइज्ड मैनेजर बनोगे। पोजीशन तो अचीव हो जाएगी, डिस्काउंट लेवल भी आ जाएगा, लेकिन इंसेंटिव ऑफ द कंपनी पर आप अचीव नहीं कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल this who have made this mistake, you know, within my business as well, and they are now unrecognized manager. You have to be 4cc active, और ये 4cc अगर आप सोचो ना, उसका पल्ला पकड़ लेना शुरू दिन से बिजनेस के, by hook or by crook, you have to do this activity. आपको मेहनत करनी है, आप यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान को अगर वॉच करते हैं हम, गाइस जिस जो भी अभी इस वक्त अपने हैंड रेज करें, मत हैंड रेज करें, आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड, अदरवाइज बिकॉज इट इज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। मैं एंड पे आपके क्वेश्चंस ले लूंगी, आप लोग फिर मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड आई विल इंशाल्लाह आंसर टू योर क्वेरीज एज वेल। ऑन अ मैनेजर पोजीशन आपका बिगेस्ट बेनिफिट है कि आप कोर पोजीशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान पे पहुंच गए, ठीक है। Again, on the manager position, the next position जो आपकी manager position की है, it is very very poor, ठीक है। You have 48% of discount you're getting here, ठीक है। Like कितना discount आपको मिल रहा है? 48%. जो कि एक बहुत ह्यूज डिस्काउंट है। इट्स नॉट अ स्मॉल डिस्काउंट, इट्स अ वेरी वेरी बिग डिस्काउंट, बिकॉज just a minute, I will one minute. Okay, so आप जो हैं अगर देखें इस पोजीशन को, कि which means that you are getting your products in almost half price, which is super fantastic. I mean, so for every 1 cc that you retail, आपको manager position पे profit मिलता है 503 dirhams, ठीक है, which is your cash profit in hand. Absolutely amazing, because इतना बड़ा प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से कोई भी किसी को अपने प्रोडक्ट पे नहीं दे सकता। For every assistant supervisor that you sponsor, you get 550 dirhams as a manager, ठीक है, which is your bonus. और आप देखो कितनी अमेजिंग बात है, वही एक्टिविटी चल रही है, it's just that the income is increasing, you know. So as you can see the example, your team leading bonus will also be between 5 to 13%. Again, depending on the positions that you have helped your team members to reach to, right? उसके बाद अगर आप देखो कि like let's say कि if you have an assistant supervisor, assistant manager in your team, you will be getting 13% from every single thing that moves through their accounts as well. So that is how you generate your group bonus, that is how you generate your team leading bonus. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनेजर की पोजीशन का ब्रेक डाउन करके देखें कि रिटेल पे मैंने आपको बताया कि पर सीसी दैट यू रिटेल ऑन द मैनेजर पोजीशन, you easily make about profit of 4, I think, how much did I tell you? It was about 503 dirhams, right? So retail profit on the manager position अगर आप देखो तो it is about 503 dirhams. 503 का आपका retail profit है on the manager position. उसी तरीके से स्पॉन्सरिंग बोनस कितना है? 558, right? उसी तरीके से टीम लीडिंग बोनस जो है वो वेरी करता है 5 to 10 to 13% डिपेंडिंग ऑन योर टीम मेंबर्स पोजीशंस, राइट? सो फॉर एग्जांपल अब इस एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। मैनेजर ने लेट्स से 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल किए, ठीक है, आप मैनेजर हैं और आपने 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल किए, 503 प्लस 503 दिरहम्स में कितना हो गया? 1006। मुझे यहाँ पे कोई हाउस वाइफ है, मुझे बता सकती है कि अगर आप यूएई बेस्ड हो 1000 दिरहम की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू है? 1000 दिरहम की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू है? बहुत वैल्यू है ना। इट्स लाइक इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट in your confidence. You are going to be able to achieve so many things. You will be able to buy so many things free of tension and anything, you know. So on a manager position, by retailing just 2 cc of products, और ये बात मैं क्यों यहाँ मेंशन कर रही हूँ, बिलीव करें मैनेजर्स जो अपनी मेहनत लगा रहे होते हैं ना अपनी टीम के लिए, वो सिर्फ अपनी रिटेल पे भी अगर फोकस कर लें, लेट्स से कि अगर वो 10 सीसी के प्रोडक्ट्स पे रिटेल करते हैं, अपनी टीम को छोड़ देते हैं और टीम बिल्ड नहीं करते, स्टिल कंपनी गिव्स देम अ चांस ऑफ मेकिंग 5000 दिरहम्स पर मंथ. But we are trained in such a way that we teach people what we have learned, because we want to share our knowledge with you all,
ताकि आप लोग भी उस पोजीशन को, उस चीज को अचीव कर सको. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरएवर. ये हमारे दीन भी सिखाता है. कुछ अच्छी चीज सीखी, आगे सिखा दो. नॉलेज बांटने से बढ़ती है. आपकी नॉलेज में इजाफा हो ही नहीं सकता, उसमें बरकत पड़ ही नहीं सकती जब तक वो अगले बंदे को जाके बेनिफिट नहीं कर रही. So as a manager, if you are just retailing the products also, इस marketing plan के benefit पे आप आराम से 5,000 दिरहम कमा रहे होते हो 10 cc रिटेल करने पे, you know, as a retailer. तो let's say कि 2 cc के ऊपर मैनेजर ने कमा लिए 1,100 दिरहम. ठीक है, 1,100 दिरहम कमा लिया, रिक्रूट कर लिया. तो आपने लेट सपोज 2 मेंबर्स रिक्रूट किए एज अ मैनेजर, तो 550 प्लस 550. ठीक है, उसके बाद आपने टीम लीडिंग बोनस के फॉर्म में लेट सपोज यू हैव मेड अबाउट 2,000 dirhams. So as a manager, you have made 4,200 dirhams by just doing this simple activity. 4,200 dirhams in Pakistani rupees is about near to 2 lakh Pakistani rupees. You get my point? So this is the beauty of this marketing plan. जो इसको use करता है, benefit करता है उससे. जो इसको use नहीं करता, बहाने करता है, वो बोलता है मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि हम चीजों को सीख सकते हैं. हम अपनी नॉलेज का इजाफा भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं. हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम कॉन्फिडेंट होना सीख सकते हैं. हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज लेकर सीख सकते हैं. हमें सिखाने का तरीका नहीं आता, हम सिखाने का तरीका भी सीख सकते हैं. आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट कर सकते हो, आप लोग मुझे डुप्लीकेट कर सकते हो. आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. व्हाट आई एम डूइंग इन द बिजनेस, व्हाट योर अपलाइन मैनेजर इज डूइंग इन द बिजनेस. आपको जो भी इंसान इंस्पायर करता है, ट्राई टू डुप्लीकेट देम इन द बिजनेस. You know, this is what you call duplication. So inshallah, this marketing plan will reward you, will help you out to achieve your goals in life, but it will only happen if you are consistent, if you are true to yourself. Think about what an extra, you know, आप बोलो कि 7,000 dirham can bring in your life. extra 7,000 dirham अगर आपको महीने का मिल रहा है, क्या जिंदगी में चेंज लेकर आएगा आपकी? As a manager, if you are able to make 7,000 dirhams per month, which is 3 lakh Pakistani रुपए per month, कितना आप क्या शिफ्ट लाएगा आपकी जिंदगी में? क्या नहीं कर सकते हो? कितने लोगों की मदद कर सकते हो? You know, you will be able to, how many of your goals would be able to, you are going to be able to achieve? So let's move forward, and I will inshallah in the next part, I will be definitely covering with you all the manager positions as well, but I will go through quickly because I have to just wind it up in the next few minutes. So developing your managers is very important. आपने manager position achieve कर ली, आप highest pay पे आ गए, you have reached to the potential of the marketing plan. This is not the position to rest. This is the position to gear up even more stronger. Because now you have the chance, you have that magic wand to change people's life. You have learned the procedure. You have went through the grind. आप उस ग्राइंड से गुजर के आए हो, आप उस प्रोसेस से गुजर के आए हो, आपको तरीका पता चल गया. अब आप पे फर्ज बनता है कि आप आने वाली अपने टीम मेंबर्स को वो भी चीजें सिखाओ जो आपने सीखी हैं. अपनी फियर्स भी शेयर करें, अपनी स्ट्रगल्स भी शेयर करते हैं हम. You should share your successes and you should share your failures as well. I at times tell my team member कि मेरे फेलियर्स से सीखो. जहां मैंने जो गलतियां की हैं उसका फायदा उठाएं. जो गलतियां मैंने अपने बिजनेस में की हैं वो आप नहीं करें. You know, उन चीजों को सीखने की कोशिश करें. Respect your upline's time and respect your time as well. And inshallah you will be able to develop this business very strongly. अच्छा, building a business, building a team is very important. उसी तरीके से जब आप मैनेजर पोजीशन पे आ जाते हैं और आप कहें कि coming to building a team, this is our business cycle. ठीक है, in front of you. इसको हम कहते हैं हमारी business cycle, जो कि 43-year-old business cycle है. It's very very simple. ठीक है, do not try to complicate it. Just follow this business cycle as you definitely, and you will definitely see results. It has worked for 43 years for people worldwide, you know, to make them millionaires. Just stick to this business cycle. There'll be lots of people, you know, who will say no to you. बहुत सारे लोग आके बोलेंगे आपको मुझे नहीं करना,
I don't get the concept of your business. I don't want to do it. Just be prepared to get at least 20 no's per day. जो इंसान पर डे 20 नोज नहीं सुन रहा होता वो काम नहीं कर रहा होता. बिलीव मी, आप काम नहीं कर रहे हो. इस बिजनेस साइकिल का अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है, आई जस्ट पुट इट ऑन हियर. ये जो बिजनेस साइकिल है आपकी, आप इसके अगर मिडिल पार्ट को चेक करो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है वाई. जिसका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, वो इस बिजनेस को स्ट्रॉन्गली मूव भी नहीं कर रहा होता, उतना कंसिस्टेंट नहीं होता. क्योंकि आपका अगर रीजन वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इस बिजनेस साइकिल को, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मूव नहीं करोगे. आप बैठे रहोगे इस इंतजार में कि आज कोई आएगा और आके मुझे कहेगा कि मैंने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है. आज कोई आएगा और कहेगा कि मैंने आपसे आज एलोवेरा जेली बाय करनी है. नहीं, व्हाई? देयर आर मिलियंस ऑफ ब्रांड्स आउट देयर. There are millions of people out there who are actually adding value to people's life. Why would they come to you? You have to move this, right? So don't worry, because we do not want people to say no. But if everybody said yes, for example, हम जाहिर सी बात है, एक चीज है कि मैं पर्सनली आपको मजे की बात बताऊं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, के कभी कभार जब कोई मुझे नो बोल देता है ना, तो मुझे इस चीज की खुशी भी महसूस होती है किसने मुझे इनकार किया है, क्योंकि ये बिजनेस हर किसी के लिए है भी नहीं ना. It's okay if somebody people say no to us. It's absolutely fine. जिनके लिए ये है और जो इसको वर्क कर रहे हैं और इसके थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, it is for them. We just have to offer the opportunity to them. If it is for them, good. If it is not, move on. Don't judge people. ये बदतमीज है, ये बुरा है, ये इसको तमीज नहीं है, ये तो रूड है. नो, डोंट जज पीपल. उनकी मर्जी है, वो नहीं कर रहे हैं. इट इज नॉट फॉर देम. मूव ऑन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. मूव योर व्हील. जितनी तेजी से जो इंसान इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दौड़ाता है, उतनी जल्दी वो इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल होता है. जितने स्लोली वो इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दौड़ाता है, वो उतना ही लेट इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेसफुल हो पाता है. बिलीव मी, दिस इज वेरी, आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग बात है कि आई टेल यू दिस, कि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, आपके पास अपना प्लान रेडी नहीं है, आप अपनी व्हील को मूव नहीं कर रहे. अब ये व्हील के ऊपर काम क्या है वो मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताती हूँ. सबसे पहली चीज, आपकी व्हील के अंदर क्या आ जाती है, ये क्या है exactly? If somebody can tell me, what do we call this? Write in the chat box. I actually wanted to wind my first step to manager training in just 1 hour, but as usual, मेरी first step to manager training always lasts up to 2 hours. Subhanallah. Because believe me, ये manual मेरे लिए life changer है, game changer है. I did not have an upline, direct upline. Believe me, it was my sister. And my sister and me, we both were brand new team starters. You know, जब हमने business start किया था, इकट्ठे ही आगे पीछे start किया था, तो उसको भी उतना ही पता था जितना मुझे पता था. जो हमारे direct वाले uplines थे, वो हमें एक ही चीज आके बोलते थे, go watch the training, खलास, खल्ली वल्ली. And I just had this manual to learn things. And I think I have a very, emotional connection with First Step to Manager. And I don't mind doing trainings on it for a longer period of time, like longer time. Planning? No, it's not planning. It's who do you know list. Absolutely. Who do you know list जो है आपके जो business cycle का सबसे integral part है. Very important part. Who do you know list. Family, friends, work colleagues, relatives, people that you find from the cold market, they all come in your who do you know list. But mostly it is warm market. जिनको आप basically जानते हो, जो आप अपना database लेके अपना business start करते हो. Who do you know list की अगर यहाँ पे बात की जाए, so basically we have to start building our who do you know list immediately. जैसे हमने business start किया, that's the first thing we should do after joining the business. It is important, guys, believe me, that our senior managers and uplines would refuse, ठीक है, our planning meetings earlier जब हमने start किया था, कि वो हमारा प्लानिंग मीटिंग नहीं करते थे, कि जब तक आप ये who do you know list लेकर हमारे पास नहीं आओगे, we will not plan. And at times even I do it with a lot of my team members, जो मेरे डायरेक्ट कई दफा स्पॉन्सर्स होंगे, जिनका मुझे अंदाजा है कि मुझे पता होता है कि इसके पास अगर who do you know list में नहीं लेकर अपनी प्लानिंग मीटिंग करूंगी, काम ही नहीं करने वाले.
you know. So I make sure that you have your who do you know list, and you have to have your who do you know list in your first planning meeting. स्टेटिस्टिक के हिसाब से बाय द एज ऑफ 18 अगर आप देखा जाए तो एटलीस्ट आप अपनी 18 साल की उम्र तक 500 लोगों को तो जानते हैं मिनिमम। आप जितने भी इन सोशल हैं, आप जितने भी लोगों से नहीं मिलते, आप लोगों को पसंद नहीं करते, जो भी आप कह लो, एटलीस्ट ऑन द मिनिमम आप 500 लोगों को जानते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दिस टेम्पलेट ऑल्सो ऑन यू नो ईगल्स टीम कम्युनिटी। आपको ये टेम्पलेट जो है आपकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ईगल्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, फॉरएवर नॉलेज पे भी मिल जाएगा। अगर आप ये टाइप करें बिजनेस साइकिल, और या फिर आप हू डू यू नो लिस्ट टाइप करेंगे तो आपको इसकी फाइल सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपने इसको प्रिंट ऑफ भी करना है तो आपको मिल जाएगा, और आप उसके ऊपर अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट्स लिख सकते हैं। जस्ट गेट दिस प्रिंटेड ऑफ, ठीक है, इसको आप प्रिंट करें, उसके बाद इसको फिल करना शुरू कर दें। हू डू यू नो लिस्ट आपकी कभी भी वो नहीं रहेगी, फॉरएवर एक ही नहीं रहेगी। यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हू डू यू नो लिस्ट जो है वो हजारों में चली जाएगी। आप यकीन करें, मेरे फोन कॉन्टैक्ट के अंदर इस वक्त 6000 कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम शाहरुख खान। You know, I know so many people in the world now. I've touched so many lives over my journey of just 4.5 years now. Like अगले 5 साल में और कितने contacts आने वाले हैं? You know, I really need to get a phone with a very very huge space. आप कहाँ पे मिलता है आपको ये चांस कि आपको इतने लोगों से बातें करने का मौका मिले, गप्पे मारने का मौका मिले, उनकी जिंदगियां देखने का मौका मिले, उनको सिखाने का मौका मिले। I've got the chance and I'm so happy about that. I've got so many. अगर मैं आज भी सोचूं कि बिनिश आइलैंड पे चली जाओ, आइलैंड पे जाके तुम्हारे पास सिर्फ फोन होगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो शायद हो सकता है इस 6000 की कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से ही मैं अगले 10 साल तक लोगों को स्पॉन्सर करती रहूंगी। Could you imagine? You know, so it's very important when you're talking to somebody online, try to bring them on your phone, ताकि their numbers are saved in your phone so that they can come in your life in a nicer way. वो अक्सर मैं बात करती हूँ कि जब आप अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं ना, तो कोशिश जब आप कांटेक्ट करते हैं, जैसे कांटेक्ट की अगर हम बात करें, बिजनेस साइकिल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हेन यू आर कांटेक्टिंग पीपल, when you start contacting them from your who do you know list, आपने you know, अब सबसे पहले तो who do you know list के ऊपर एक चीज को मैं बताना चाहूंगी कि आपने कमेंट्स क्यों लिखने होते हैं, ठीक है। कमेंट्स आपने इसलिए लिखने होते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि आपको वो बंदा मिला कहाँ से है, आपका उससे रिलेशन क्या है, आप कैसे उसके बारे में क्या जानते हो, या उसके बारे में क्या एक पर्टिकुलर चीज है, आप वो चीज मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो हू डू यू नो लिस्ट आपको कहाँ से बनाने का चांस मिल सकता है? आप फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल, नेशनल, ग्लोबल, wherever they are, you can just put them their names on your who do you know list very very easily, ठीक है। उसके बाद आप मेमोरी जॉगर पे जब आते हो, अब मेमोरी जॉगर जो है काम करना है ना, उसका थोड़ा इस्तेमाल करना है। फिर मैं आगे जाके कांटेक्ट की बात करती हूँ कि कांटेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक बड़ी मजे की चीज मेरे जहन में आई है कि लेट सपोज कि आप मेमोरी जॉगर को काम करते हो कि आपका पास्ट में कौन था, ठीक है, थोड़ा सीआईडी मोड में आ जाते हैं। आपके पिछले जमाने में कौन, आप किसी को जानते थे, आज आप किसको जानते हैं, इन फ्यूचर आप किसको जानने वाले हैं, ठीक है। एवरीबडी दैट यू फाइंड will come on your who do you know list, they will come in your contact list. Anybody who is from your previous job, aapka neighbor, anybody who lived in your area, anybody you met you know as your आप उनका, आपका और उनका पास टाइम सेम है, आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है, आप उनको लाइब्रेरी में मिले, आप हाथ में, आप यकीन करें मैं आपको अपनी एक कहानी स्टोरी बताती हूँ, बड़ी मजे की कहानी याद आई है। सुभान अल्लाह, लाइक आई एम सो सच अ कोर फॉरएवर बिजनेस ओनर। मैं उम्रा गई 2019 की बात है, और आपको पता है हम जियारत के लिए जाते हैं तो लेडीज का टाइम अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। तो लेडीज के टाइम था, रात के 12 बजे का टाइम था। अब मैं लाइन में खड़ी हूँ, वहां पे लाइन बनाई जाती है कि आप जियारत के लिए बारी बारी जो है ना वो ग्रुप जाता है, ग्रुप्स के ग्रुप्स जाते हैं। अच्छा, मैं लाइन में खड़ी हूँ और मैं लाइन में खड़े खड़े मुझे ना दो लड़कियां मेरे आगे, एक तो बड़ी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप भी होगी मेरे खड़े खड़े लाइन में खड़े खड़े, दोस्ती होगी उनके साथ। तो वो मुझे भी सपोर्ट करी, कहती है, मुड़ के एकदम से कहती है कि
मिल के जाएंगे, ठीक है। वो धक्का धक्का लगता है तो एक काम करेंगे, हम तीनों जो है ना इकट्ठे जाएंगे, ताकि हम नमाज जब पढ़ने लगे ना तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, कि आगे पीछे खड़े हो जाएंगे तो हम आसानी आराम से सजदा कर सकेंगे। अच्छा, हमारी बातों बातों में दोस्ती होगी, जो है थोड़े से टाइम में, आधा घंटा के अंदर अंदर। अब उस हाफ एन आवर के अंदर अंदर ही मुझे अंदाजा मेरे दिल में हो गया कि यार इस लड़की को तो मैंने अपनी टीम में लेकर आना है, आई वांट हर एज माय टीम पार्टनर। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम गए, फिर भी प्रेड नमाज। अच्छा, निकलते निकलते, अब ये नहीं कि मैंने उधर खड़े खड़े प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी और मेरा जहन जो है वो अपनी इबादत से निकल गया, नहीं। आई जस्ट आस्क्ड हर, मैंने कहा अपना नंबर जो है ना मुझे दे दो, मैं अपने फोन में सेव कर लेती हूँ। जो दूसरी थी वो उसकी भाभी थी, एंड शी वाज बेस्ड इन यूएई, और जो दूसरी जो लड़की जिससे मैं बात कर रही थी, शी वाज बेस्ड इन अल खुबर, वो खुबर से आई हुई थी उम्रा करने। मैंने उसे नंबर ले लिया, मैंने नंबर फोन में सेव कर लिया। फोन पे सेव करने के बाद मैं होटल पहुंची अपने, रात को मतलब वो जियारत कर ली, नमाज पढ़ ली, एक दूसरे को बाय सी ऑफ कर लिया। वापस आके मैंने होटल आते ही उसको जो है ना मैसेज किया, मैंने कहा कि दिस इज मी, मेरा नंबर जो है ना अपने पास सेव कर लो, और फिर इंशाल्लाह जो है ना बात करूंगी मैं जैसे ही मैं वापस पहुंचती हूँ यूएई, तो इंशाल्लाह इन कनेक्शन रहेंगे। साथ ही मैंने उसको अपने फेसबुक का लिंक भी शेयर कर दिया कि मुझे फेसबुक पे भी ऐड कर लो। अच्छा, मैंने उसको फेसबुक पे भी ऐड कर लिया, और इसी तरीके से बिलीव मैंने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं की, वल्लाही मैंने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं की। आई डिडंट पिच द बिजनेस टू हर, जस्ट बिकॉज वन डे शी केम अक्रॉस वन ऑफ माय स्टोरी ऑन फेसबुक, शी आस्क्ड मी, ये तुम क्या काम करती हो, what do you work like, what is this business all about? And then I told her, ठीक है, come to my business presentation online, I will show you the business presentation. I just sent her the recorded link, I think at that time मैंने उसको recorded link send किया, उसने business presentation देखी, उसने मुझसे 5-10 सवाल किए, मेरी इनकम कैसे आएगी, ये है वो है फलाना है, प्रोडक्ट्स क्या हैं। Believe me, within 15-20 days she joined me in the business by following me again on my stories on every single day. This is the power of stories. And this is the power of making connections with people, right? So you have to make right connections with people. And believe me, if Allah has destined them to be part of your journey, destined them to be part of your life, they will come to you eventually. So इस चीज के ऊपर जो है ना मेरा बहुत यकीन है कि आपका जो मेमोरी जॉगर प्लस आपका कनेक्शन मेकिंग कहीं पे भी किसी जगह पे भी वेस्ट नहीं जाता। एट द जली, you know that girl that I'm talking about. She is your relative as per you. She's one of your far relatives, right? So this is the beauty कि देखो दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई relationship निकल ही आता। This is how I have prospected her. This is how she became part of the team. Okay, so it could be anywhere that you can find your people by working your memory jogger. उसके बाद बात आ जाती है कांटेक्ट करना है अब आपने, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली प्रोफाइलिंग शीट्स हैं अभी फिलहाल तो। आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोफाइलिंग शीट्स, बट अगर इफ यू आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन योर बिजनेस, आई वुड सजेस्ट यू कि बिल्कुल प्रोफाइलिंग शीट्स बनाएं, बिकॉज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग और आप अपने टेबल पे बैठते हो या जहां से भी आप काम करते हो, आपकी प्रोफाइलिंग शीट सिर्फ आपके पास रेडी होती है, तो आपको पता होता है आपने किसको कांटेक्ट करना है, आपने किससे बात करनी है, आपका वक्त आज किसका है, राइट। तो कांटेक्ट करने का जो तरीका है ना इंसान का अलग अलग होता है। अब लेट से कि मेरी कोई दोस्त मुझसे मिलती है, मस्जिद में मिलती है, मैं वीकली उससे मिलती हूँ मस्जिद में कुरान क्लास के लिए, तो मैं उसको बिजनेस फोन पे नहीं ऑफर करूंगी, मैं उसको बिजनेस जो है व्हाट्सएप पे नहीं ऑफर करूंगी, मैं उसको वही बिजनेस ऑफर करूंगी जहां मैं उससे मिलती हूँ, जो मेरा उससे कांटेक्ट करने का तरीका है। लेट्स से कि मेरी कोई दोस्त मुझे मिलती है, आप कहो कि ब्रेकफास्ट पे, मॉर्निंग कहीं पे मैं ब्रेकफास्ट जाती हूँ, वीकली जाऊं मंथली जाऊं, मैं उसको वहां जाके बिजनेस ऑफर करूंगी। द फर्स्ट ऑफर दैट आई विल मेक विद द पर्सन इज वेयर आई do my contact on regular basis with them. मैं उनसे कभी भी अब लेट्स से कि मेरी कोई कजन है, उससे मैं फोन पे बात करती हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे बातें नहीं करती। अब अगर मैंने उसको व्हाट्सएप पे बिजनेस ऑफर की तो वो बोलेगी ये पागल हो गई है, तुम पागल तो नहीं हो गई आज, मुझे व्हाट्सएप क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे फोन पे बात करती हो, यू नो। जब आपने बिजनेस ऑफर करना है, किसी को कांटेक्ट करना है, तो उसका तरीका बदलना नहीं चाहिए, जो आपका उनसे रेगुलर तरीका होता है कांटेक्ट करने का, ठीक है। वन टू वन करने के बहुत से तरीके होते हैं, वन टू वन फोन पे भी हो जाता है, वन टू वन जूम कॉल पे भी हो जाता है, वन टू वन मिल के भी हो जाता है वो कप ऑफ कॉफी, वन टू वन खड़े खड़े लिफ्ट में भी हो जाता है,
यू नो आपका जो भी कांटेक्ट करने का तरीका, मेरे नेबर में देयर इज वन व्हाट यू कॉल वन डेंटिस्ट, मुझे अव्वल तो खैर पता नहीं था कि वो डेंटिस्ट है, मेरी आते जाते उससे बड़ी दोस्ती रहती थी, पिछले कुछ मंथ से पुरानी बात है कि उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी, अब मुझे पर्सनली तो नहीं पता था दैट शी इज अ डॉक्टर, तो आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई विल गिव यू समथिंग which will really help you out to get rid of the pain that you have around your ankle. उसने मुझे कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज इट। उसके बाद मेरी और उसकी इस लेवल की दोस्ती है कि मतलब हम कोई भी बात करते हैं, लाइक हमारा इतना ही रिलेशनशिप है कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कभी स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो वहां पर आते जाते जो है ना आपस में जो है हमारी बातचीत हो रही है, हेलो हाय हो रही है, तो उतना ही हमारा रिलेशनशिप है। बट बिलीव मी वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया हुआ है कि आज अगर मैं उसको बोलूं, ठीक है, because she has stopped practicing, she was like कि मैं काफी सालों से कर रही थी, वो खैर she is going to India because उसके भाई की शादी है, तो I have a plan on my mind कि I have to then offer her the business opportunity as soon as she is back from India, वेडिंग अटेंड करने के बाद। हंसते हंसते लाइक शी वाज टेलिंग मी इन द लिफ्ट के इतने साल हो गए कभी ज्वेलरी नहीं पहनी, इतने साल हो गए बीइंग अ डेंटिस्ट, आपको पता है हम रिंग्स नहीं पहन सकते बिकॉज हमने कितने प्रोसीजर्स करने होते हैं, तो आप हाथों पे रिंग्स नहीं पहन सकते और कितनी ऐसी चीजें होती हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ नहीं अब मौजे करो, अब टाइम आ गया तुम्हारा कि तुम पहनो, रिंग्स पहनो, बैंगल्स पहनो, जो भी चीजें पहनी, ज्वेलरी पहनो और एंजॉय करो अपना वेडिंग पे जाके। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल, जो आप जिनको नहीं भी जानते जिंदगी में, जिनका आपके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। फॉरएवर इज दैट ब्यूटीफुल, इट गिव्स यू चांस टू कनेक्ट विद पीपल। अगर मैं आज फॉरएवर का पार्ट नहीं होती तो मेरे पास ऐसी क्या बात होती जो मैं उससे करने का सोचती, या क्यों मैं रिलेशनशिप बनाती, तो आपको एक चांस भी मिलता है कि इसके थ्रू यू कैन बिल्ड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। उसके बाद the next procedure is very simple. You offer the business to them, you show them the business presentation, you invite them for the 10 p.m. link, or you invite them for the day course day 1. उसके बाद आप action लेते हो once they have seen the information, you plan their goal, you train them, you get them enrolled, they help them to order their journey back. And anybody who moves this cycle strongly and very fast, they will be very, very successful in forever business. उसके बाद प्रोफाइलिंग ऑफ योर कस्टमर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो कि खाली प्रोस्पेक्ट्स की प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब आपका C9 का कोई कस्टमर लेट्स सपोज के डे 2 पे है, अगर आपने उसकी प्रोफाइलिंग नहीं की, क्योंकि C9 की भी प्रोफाइलिंग शीट्स आती हैं, वो भी आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी इन द ईगल्स टीम कम्युनिटी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये क्लाइंट डे 4 पे है? अब जाहिर सी बात है उसने 9th डे खत्म किया, आपके पास प्लान प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैंने आगे इसको क्या ऑफर करना है। एनीबडी हु इज weighing about 120 kgs, एक C9 से क्या उसकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। हमें पता है उनको हमने ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके जाना है। यहाँ तो वेट लॉस की बात ही नहीं हो रही। वेट लॉस की बात तो जी होती है अगर कोई कैबिन क्रू है और उसने हॉलीडे पे कहीं पे गई है, तो जी उसने वेट पुट ऑन कर लिया, तो उसने सिर्फ 4 से 5 kg वेट रिड्यूस करना है। दैट इज व्हाट यू कॉल इट लिटिल वेट लॉस, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद दूसरा बंदा, अगर कोई मॉडल है, कोई एक्ट्रेस है और उसने कहीं पे हॉलीडे पे गई, दे हैव पुट ऑन देयर वेट, या फिर उनके कोई फंक्शन पार्टी आ गई, दे हैव पुट ऑन देयर वेट एंड यू गिव देम द C9, दे रिड्यूस देयर 4 to 5 kgs। लेकिन जिस तरीके की हेल्प हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर बॉडीज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर स्किन, राइट? So uske liye you have to profile your customers as well, and this is how you will be able to build that 20 customers which will retain with you for the rest of your life. ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स, व्हाट्स योर अप्रोच? इनवाइट टू अ प्रोडक्ट पार्टी, पब बॉक्सेस ड्रॉप करना, C9 की मार्केटिंग करना, 1-to-1 मीटिंग्स करना, कॉफी मॉर्निंग्स करना, ये सारी चीजें पार्ट हैं हमारे फॉरएवर बिजनेस का। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो, दिस इज हाउ यू कॉन्टैक्ट पीपल, दिस इज हाउ यू बेसिकली बिल्ड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप 1-to-1 कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, या वीडियो दिखा रहे हो, वेबसाइट दिखा रहे हो, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, राइट? अप्रोच करने का तरीका फोन होता है, टेक्स्ट मैसेज करना, मैसेंजर पे बात कर ली, व्हाट्सएप पे बात कर ली, फेस टू फेस। मैसेंजर पे मैं बात नहीं करती किसी से भी, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा अगर किसी से बात करती हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। मैसेंजर पे मैं इस वजह से बात नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के घर के डोर पे खड़े होकर उससे बातें कर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आती है वर्चुअली, सीरियसली। तो मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ और मैंने कॉन्वर्सेशन बढ़ानी है, तो दे हैव टू बी ऑन माय व्हाट्सएप,
You know, I feel more comfortable. It might be different for you, but I think for me, what works is bringing people on my WhatsApp, and that is where I connect with them better. I think you all will agree. Anybody who is my direct sponsor, they will definitely agree to it. कि मैंने कोई भी information आपको messenger में नहीं दी हुई, because I don't personally. तो यही चीज मैं आप लोगों को भी suggest करूंगी कि whenever you have a team member or anybody who's trying to approach you for the business, bring them on your WhatsApp. अपने cozy environment में ला के उनसे बात करें. जो messages, जो details आप messengers के अंदर और Instagram की आप messenger के अंदर देना शुरू कर देते हैं, इनबॉक्सेस में देना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा होता है कि जैसे आप किसी को अपने घर के अंदर आने नहीं दे रहे, उनको बाहर ही खड़ा किया, वो टांगे चौड़ी करके नहीं, बंदा हाथ खड़ा हुआ होता है, खबरदार जो अंदर आई इधर ही खड़ी होकर बात करो, वो वाली फीलिंग आती है मुझे. तो इस वजह से यू हैव टू bring them in your cozy environment first. You have to make them absolutely, you have to make them comfortable, and then you have to talk to them and you have to provide the information, whether it is about the product or whether it is about the business. Inshallah. ठीक है. ओके, सो प्रोफाइलिंग जो है आपकी 15 to 20 पीपल की हमेशा रहनी चाहिए आपके पास. लेट्स से कि आपने सिर्फ 2 से 5 लोगों को कांटेक्ट करना है पर डे, तो आप एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हो. अगर आप मेरी तरह काम कर रहे हो तो आप मिनिमम 5 to 10 पीपल पर्सनली कांटेक्ट करोगे. बिलीव मी, जेन लीच ने एक दफा एक ट्रेनिंग की थी, वो भी QLS कनेक्ट पे वो ट्रेनिंग है. वो कहती है कि मैं पिछले 25 साल से फॉरएवर का पार्ट हूँ. आप यकीन करो, वो पुरानी है, जाहिर सी बात है, वो शुरू से फॉरएवर कर रही है, उनका तरीका वही है. अभी भी शी टॉक्स टू पीपल ऑन फोन. तो वो कहती है कि जब तक मैं दिन के 5 कॉल्स नहीं कर लेती ना, फोन कॉल्स नहीं कर लेती, मुझे सुकून नहीं आती. मैं सोच नहीं सकती जाके कि मैंने 5 लोगों से बात नहीं किया. वो यस आए या नो आए वो मैटर नहीं करता, बात करनी है. तो शी वाज लाइक कि मैंने बड़ी जबरदस्त उनकी मजेदार सी स्टोरी है. आई विल इंशाल्लाह टैग यू ऑन दैट, या फिर मैं वो वीडियो ही सेव करके इंशाल्लाह आई विल शो यू गाइस दैट इंशाल्लाह आफ्टर दिस मीटिंग. It's a very very lovely way, the way she has explained के how she makes call, और पहली कॉल पे क्या हुआ, दूसरी पे क्या हुआ, तीसरी पे क्या हुआ, और फिर पांचवी पे क्या हुआ. This is how you are supposed to contact with whatever way you are comfortable. So this is how you are going to move forward on the first step to manager. So मेकिंग कॉन्टैक्ट जो है, बहुत सारे तरीके यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए गए हैं फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट के अंदर. इनको आप कॉपी करें, इनकी प्रैक्टिस करें. आप अपने वर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं. आपने इस फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुकलेट को रीड करना है, ठीक है. हाउ टू मेक कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस कंप्लीटली. इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट टू make those pitches and how you are going to make your sentences. आपकी conversation में क्या चीज होनी चाहिए. For example, जैसे ये text message है, hey, how are you? I don't know if you have heard, but I have started a new really exciting business with the potential to make a second income of $1,000 a month. Would you love to and would love to show it to you. Might be something that you would like to do with me. आप कोई भी मैसेज यहाँ से लिखकर जो है कॉपी कर सकते हैं, अपना भी ऐड ऑन करें ताकि एक पर्सनलाइज सा वो मैसेज हो जाता है. गला जो है ना मेरा फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर जब मैं कराती हूँ ना, इस वजह से मैं the last, I think, when did I do the last one? That was way too long now. Like that's why I always say that before I get started with the first step to manager, I always make sure that I'm making a right room for the time, because I know it might take some time, because this is very important as well. इसकी हर फाइन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर नहीं उसके ऊपर फोकस किया जाए या क्योंकि जब फोकस नहीं करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन में उसको नहीं लेके आओगे, तो अप्लाई भी नहीं करोगे ना इन द एंड ऑफ द डे. तो इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है आप किस तरीके से करोगे, हाउ यू गोइंग टू मेक योर फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस कैसे होने चाहिए, फेसबुक मैसेजेस कैसे होने चाहिए, वो हर चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इन मेकिंग कॉन्टैक्ट इन योर फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर की PDF में. ठीक है. और आपको मजे की बात पता भी है ना, ये चीज तो सबको ही पता है, I'm sure के PDF के अंदर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. कोई भी तरह का PDF हो, आप उसके ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ये सबको पता है, राइट? जिसको नहीं पता है होप उसको आज पता चल गया कि किसी भी फर्स्ट स्टेप टू किसी भी PDF फाइल के अंदर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट? अब ये बुलेट पॉइंट्स नहीं मैं सजेस्ट करूंगी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये बुलेट पॉइंट्स पुराने हो गए हुए हैं, टू रिस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस.
I don't suggest that, but yes, this company is called Forever. Have you heard about it? मैं इस तरह से किसी को approach नहीं करूँगी. I will always approach people by saying कि have you would you want to make an extra income on top of whatever you are doing at the moment? I would love to show you the information. So these are few things that you are supposed to read through while making your contacts and developing your profiles of people. You know, it will help you to connect better. उसके बाद एक्टिविटी ट्रैकर आ जाता है. जब आप किसी के साथ कांटेक्ट में होते हो तो वो किस लेवल पे है आपकी कॉन्वर्जेशन से, वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. आपने नाम लिखा उनका, आपने लिखा वार्म एंड कोल्ड, वो इंटरेस्टेड है नहीं है इंटरेस्टेड, यू नो उनकी फोन नंबर, आपका 1-to-1 हो चुका है नहीं हो चुका, आपकी बात हो चुकी है. 1-to-1 का मतलब ये होता है कि आपकी डायरेक्ट बात हो चुकी है, कॉन्वर्जेशन डिटेल में हो चुकी है नहीं हो चुकी. अगर हुई है वेबसाइट पे या फिर वेबसाइट से जूम पे हुई है या वीडियो चैट पे हुई है या 1-to-1 बेसिस पे हुई है, आप वो यहाँ पर मार्क करते हो, डेट लिखते हो और टाइप ऑफ योर 1-to-1 आप मेंशन करते हो. फिर आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन उनको दिखा दी, आप टिक करते हो यहाँ पे. आपने रजिस्टर कर लिया है, डेट आप लिख दोगे. आपकी उनकी फर्स्ट प्लानिंग मीटिंग हुई है नहीं हुई, आपकी फेस टू फेस हुई है या ऑनलाइन हुई है कि नहीं हुई. फिर आप थोड़ा सा कॉमेंट लिख के अपनी एक्टिविटी ट्रैकर को गेट डन कर लेते हैं. एक्टिविटी ट्रैकर का PDF भी आपको यूएस टीम की वेबसाइट पे मिल जाएगा इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन, और आपको फाइल सेक्शन ऑफ द ईगल स्ट्रीम कम्युनिटी भी ये मिल जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. उसके बाद building your team, again the business cycle is here. As you can see, you know, you introduce your guests to the meeting, leaders and successful FBOs, when you are actually doing the presentation, how you invite people to the presentation, जब आप live अपने home पे भी business presentations call कर सकते हैं, and how you end the business presentation, you can read through this PDF here. उसके बाद फिर 7-day प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 7-day प्लान नहीं बनाते हो तो नाउ फाइनली एक और यहाँ पे बहुत there is where you will do your own planning. ठीक है, for the day of every single week. ये 7-day प्लान के अंदर, like now no one will do this for you, believe me, I will not do it for you. You have to do it on your own, your 7-day plan. तो उसमें ये होता है कि you will write down what you plan to do this week is, what are the income generating activities जो आपने करनी है. pub boxes देने हैं, PRs देने हैं, आपने experience packs देने हैं, आपने call करनी है, आपने messages करने हैं, आपने ads लगानी है. whatsoever is in your plan for that particular week, आपने उसको write down करना है. It will be so easy for you to manage all that you're prospecting. उनके नाम भी आप लिख सकते हो कि मैंने किस किस contact करना है, वो किस लेवल पे हैं, क्या है अदर एक्टिविटीज मैंने क्या करनी, कौन सी ट्रेनिंग्स मैंने वॉच करनी है, अगर किसी टीम के इवेंट पे मैंने जाना है. हर चीज आपके 7-day के प्लान के अंदर होनी चाहिए. ठीक है. ऑल्सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट व्हेन यू डू दैट, टेक अ पिक ऑफ योर प्लान एंड पुट इट ऑन योर टीम पेजेस. ठीक है, पावर टीम के ऊपर लगा दो, फेसबुक के ऊपर लगा दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो. स्टार्ट गेटिंग एक्टिव ऑन टीम पेजेस, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू एनकरेज योर टीम मेंबर्स हु आर वाचिंग यू. उनको even if you have one team member, I mean it, believe me, they will know that what exactly they need to become, and you know, to become successful they need to do all of these activities what you are doing, and they will follow you in the end. And even if you don't have a team member right now, start acting like a leader. If you have done something good, share it. ठीक है, do a little video, put it up, start doing this from now onwards itself. Leadership को play करना शुरू करें, acting like a leader, even if you don't have a team member. Open your diary, identify potential pockets of time, slot in your activities from your 7-day plan, book your launches, do your invites, register for Forever websites, you know, different trainings and all, so that you can learn more about it. So it's a manager developing business, right? आपको मैंने ये पहले भी बताया कि it's not about just recruiting people, it's about developing leaders. इस चीज को deeply समझें. Forever is not about recruiting people. Forever is not about retailing products. Forever is about developing managers, developing leaders. So why you get and what do you get? मैक्सिमम पर्सनल बोनस मिलता है आपको, मैक्सिमम टीम लीडिंग बोनस मिलता है, एक्सेस टू कंपनीज इंसेंटिव जैसे फॉरएवर टू ड्राइव, चेयरमैन बोनस, टेक ट्रैवल. अकेले हो ही नहीं सकती जब तक आपके पास टीम नहीं है. ये अपने ख्वाबों ख्याल से निकालना ही. ख्वाब मुझे भी आते थे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी. इट डजंट हैपन दैट वे. रेडी टू बिल्ड अ रॉयल्टी स्टाइल इनकम, जेम बोनस तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो जब आपके पास
टीम होती है, जब आप लोगों को कामयाब कर रहे होते हैं. वंस यू हैव अचीव द पोजीशन ऑफ मैनेजर, यू कैन नॉट लूज इट. यू एंजॉय इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. मजे करो, nobody will take it from you. सो मैनेजर पोजीशन को अगर ये प्लान अगर आप फॉलो करो, अगर आप देखो कि अगर आपने 5 मंथ्स में सोचा है कि मुझे मैनेजर पोजीशन अचीव करनी, month 1 5 cc, month 2 15 cc, month 3 30 cc, 50 cc and then 70 cc. You are a manager by end of 5th month. Basically मैंने इस प्लान को फॉलो किया हुआ है, 5 months plan, because I was a manager in first 5 months of my business, alhamdulillah. 6 month plan को आप फॉलो कर सकते हैं. अब ये क्यों आ रहा है, जाहिर सी बात है 2 consecutive months में प्रमोशन होता है, तो ये पहले वाले सीसीज का क्या मकसद है, ये आपके प्रैक्टिसिंग मंथ्स हैं. हर चीज की बेस बनाई जाती है ना, हर चीज की बेस बना के आगे चला जाता है. कोई भी केजी स्किप करके, किंडरगार्टन को स्किप करके, ग्रेड 1 ग्रेड 2 को स्किप करके ओ लेवल्स क्लियर नहीं कर सकता. ओ लेवल्स क्लियर करने के लिए वो पूरी पीछे से साल आते हैं ना, जिसमें आप एबीसी से स्टार्ट करते हो. एबीसी करी, उसके बाद फिर आपने लिखना सीखा, आपने रीडिंग सीखी, उसके बाद फिर आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कि आप उस लेवल पे आ जाते हो कि आप एसेस लिखना सीख लेते हो, राइट. हर चीज की बेस बनती है ना, फिर आप फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचते हो, चाहे किसी भी लेवल पे आप हो, उसकी एक बेस होती है और फिर आप फाइनल प्रोडक्ट तक आते हो. उसी तरीके से मैनेजर पोजीशन को अचीव करने के लिए भी आपको अपनी बेस बनानी पड़ती है. ये नहीं है कि ओवरनाइट एक दिन उठे जागे तो 60 सीसी हो गए जी एक महीने में, तो जी अगले महीने में 60 सीसी हो गए ठा करके और अब मैनेजर बन गया, ऐसा नहीं होता. वो और बात है कि if somebody wants to invest in the business with a different mindset and they are like कि let me invest 60 in my business and 60 in the other month and manager is ठा करके done, that is another story. But if you really want to base your business, you will base it like this. If your plan is 6 months, 5 cc, 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 70 cc, मजा भी आएगा काम करने में, एक्टिविटी में रहोगे, मोशन में रहोगे. 7 months plan, 5 cc, 10 cc, 15, 25, 35, 50, 70, eventually you are a manager. Finally you are a manager, you know. So whatever plan you make, it is going to be your personal plan. कोई भी उसमें hard rules नहीं है कि आपको उसी प्लान को फॉलो करना है. अब let's suppose कि मैं 6 month plan to manager को देखती हूँ, तो 6 month plan to manager में अगर आप देखो कि आपने एक से 3 लोगों का आपने स्पॉन्सरिंग किया, ठीक है, 1 2 3 आपने स्पॉन्सरिंग किया. रिटेल आपने 2 से 3 रिटेल रखी, रिपीट कस्टमर्स आपके आए तो 0.5 सीसी वहां से आगे, पर्सनल यूज आए तो 0.5, आपने 5 सीसी अपने डन कर लिए. पहला महीना तो डन करेंगे ना इंशाल्लाह, बेस तो बनाएंगे ना अपनी, कि अपनी रिटेल भी कर ली, स्पॉन्सरिंग भी कर ली. जो आपके पुराने कोई कस्टमर्स हैं या रिपीट कस्टमर नहीं है तो नए बनाए, मतलब आप अगर न्यू स्टार्टर हैं, पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हो गए तो आपने 5 सीसी का बिजनेस अपना जनरेट कर लिया. उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आपने 6 मंथ प्लान को अगर फॉलो करें, 10 अब सेकंड मंथ पे हम आ गए. अब सेकंड मंथ पे हम आ गए तो जी आपने 5 सीसीज किए अपने, जो अपनी एक्टिविटी आप यहाँ पे कर रहे थे उसको आपने दोबारा रिपीट किया. आपने 3 टीम मेंबर्स को सिखाया कि वो 5 सीसी वो कैसे कर सकते हैं. तो आप सोचो कि अगर आपके 3 इन टीम है मेंबर्स, तो आप इमेजिन करो कि आपके कितने सीसी हो जाएंगे. 2 at 5 सीसी, 2 लोगों के 2 सीसी हो तो 10 सीसी हो जाते हैं. उसी तरीके से 3 लोगों के अगर 2 सीसी होते हैं तो आई मीन 5 सीसी होते हैं तो 15 हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर वी आर स्पीकिंग अबाउट ओनली 2 पीपल आर डूइंग 5 सीसी. मे बी यू हैव 1 असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड दिस इज यू. आप दोनों ने मिलकर 5 सीसी किए तो कितने हो गए, 10 सीसी हो गए, राइट. आपका सेकेंड मंथ हो गया. अब थर्ड मंथ पे हम आ जाते हैं. अब आपकी टीम के अंदर 3 लोग हैं, राइट, सपोज आपकी टीम में 7 लोग हैं, लेकिन काम करने वाले आप सपोज करो कि इनके में भी इसके नीचे 2 लोग हैं, इसके नीचे 1 है, तो वो टोटल 7 टीम मेंबर्स काउंट हो रहे हैं. और आपका कोई पर्सनली स्पॉन्सर्ड 1 टीम मेंबर है न्यू मे बी. तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपकी एक टीम मेंबर से 5 सीसी जनरेट हो रहे हैं, उसके नीचे एक टीम मेंबर है जिससे 5 सीसी जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ आपका भी एक अलग से डायरेक्ट भी सेपरेट टीम से हटके भी डायरेक्ट से हटके भी एक और टीम मेंबर है जिससे 5 सीसी जनरेट हो रहे हैं. तो आप सोचो कि आपका टोटल बोनस कितना हो गया, 20 सीसी हो गए ना. 5 + 5 + 5 + 5, 20 केस क्रेडिट. This is how you are going to move forward as well. This is how the addition of the case credit happens. It accumulates all together. And this is how you get benefited with the numbers.
And this is how you can achieve your positions on the marketing plan. Everyone's journey to manager is personal. It does not matter if it is 5 months, 7 months, or longer than that. What matter is you are working your plan. Jane Leach कहती हैं, हमारे diamond manager कहती हैं कि you have to just work your plan. अब इस प्लान के अंदर कुछ माइनस शाइनस भी हो सकता है, एडिशनल भी हो सकता है, मर्जी है भैया, आपकी बिजनेस है, आपका कितना एडिशन करना है, कितना माइनस करना है, इट इज टोटली ऑन यू. योर मैनेजर प्लान, देयर आर मेनी वेज टू गेट टू मैनेजर. ठीक है, what matters is developing a structure to work towards. Structure your activity depending on your time and commitment. There's no perfect way. What matters is putting in the activity in place. ठीक है. All right, so building a team is, as I told you all, is important. It is very, very important. You have to build your team, and that is where you will be able to reach to your next level on the marketing plan. This is the template that they have given to plan your business. Maybe आप इस पे 5 लोगों के नाम लिख सकते हैं जिनको आप इस महीने स्पॉन्सर करना चाहते हैं. मैं किसी का प्लान बनाना चाहूंगी यहाँ पे over the call. जो भी over the call है, please let me know 5 names that you want to sponsor in your business. Then I will take your name and inshallah I will tell you that how the things are going to work. If you're planning your supervisor level this month, let me know. Or if you have already sponsored 3 people or 2 people into the business in this month, you still have a lot of days left in the month. Believe me, मेरी अक्सर जो big number of case projects जो मेरी अपनी retail के recruitment के अक्सर हो रहे होते हैं, by end of the month हो रहे होते हैं. अल्लाह की कुदरत है कोई इसके अंदर. So just let me know, just let me know 5 names that you want to sponsor, any one of you that you want to sponsor in your business in the next month, or this month, or next month, or the month after that. Tell me 5 names. No one? You can write in the chat box. Saima, okay. Sabah, Nazia, okay. Umme Musa and Tuba and Hajra. Perfectly fine. ठीक है. अब let's suppose this is Sabah here. ठीक है. और सबा ने जी स्पॉन्सर करना है एक साइमा को, एक नाजिया को, एक जेबा को, एक सबा ने स्पॉन्सर करना है हमजा को, और एक सबा ने स्पॉन्सर करना है, टेल मी द 4th नेम एज वेल. सबा. Okay, Anam is sponsored. This is Anam, and Anam wants to sponsor 5 of her friends: Sara, Hena, Mishal, Nida, and Shania. ठीक है. अब let's suppose कि हो सकता है वो ना भी कोई इसमें से एक आध बंदा ना भी sponsor हो, which is fine. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन if they are able to get into your business, you are going to hit your next promotion very, very soon. Because let's suppose this month you are 4cc active and you are able to sponsor 5 people in your business. आपके business में कितने cc's आएंगे? 14 cc's you are going to be by end of the month. या फिर let's suppose if you are on 0 even and you are able to sponsor about 5 people, you will be 10 cc. That is the base month of yours towards supervisor level, right? अब जैसे यहाँ पे देखें तो आप जिस तरह पहले बताया कि 2 से 5 लोगों को जब आप कांटेक्ट करते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख लें कि 2 से 5 लोगों के जब आप नोज ले रहे होते हैं, तो you can easily do this business part time. That is called a part time business. But when you are getting about 10 plus, this is your full time business, inshallah. ठीक है? So if somebody offers you an amazing business opportunity, but you are not sure you can do it, say yes and learn how to do it later, inshallah. Okay. Now, if you guys have any questions, anything that is not clear, anything that you want me to speak on, write in the comments. I will, inshallah, answer to 3 questions, and then I will take an off. It's 12 o'clock. I will inshallah send you the PDF, Shiara. मैं आपको PDF भेज दूंगी. आपकी new team member को please add करवाएं groups में. I think she has received her journey pack. मुझे please उनका number forward करें. मैं उनको ये add करूँ group के अंदर. Most welcome, loads of love, girls, and thank you so much for logging on.
I can't repeat it over again, Sabah. I will send you the recording of First Step to Manager training. Watch it and inshallah you will get your answers. Take care of yourself. Allah Hafiz. Have a nice day. Have a nice weekend. Maze karo, mauze karo. Business ko enjoy karke karo inshallah. Allah Hafiz.